हाँ 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 इशू आ रहा है पैकेट लॉस का, पैकेट लॉस का। Good afternoon, guys. Good afternoon. फ्राइडे चलता है। गोल्ड शायर तो बंद है शायद अभी। ये गाइडन जा सकता है। हाँ, ये गाइडन इससे वेतन पता है। डन। चलो ठीक है, अगला मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ यार। नहीं नहीं, माई कैडी, यू यूज माई कैडी ना। इट्स ओके। एक दिन के लिए थोड़ी ना कैडी मिलेगा। चलो ठीक है। ठीक। So I will start by 3:05. Okay. For 5 more minutes. रौनक कहाँ गया भाई? तो आज स्टार्ट करते हैं। धीरज, यू आर देयर? यस सर। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? हाँ सर, एक सेकेंड। सर एक दो क्वेश्चन थे पोजीशन साइजिंग को लेके, वो क्लियर हो जाएंगे ना, अभी यही डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है। नहीं सर अपने उसके हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से। Yes, we'll discuss all of that, Anuj. धीरज, you can share your screen. नीचे ऑप्शन होगा शेयर स्क्रीन का। Yes, we can see Dheeraj, your screen is loading. Everyone can see Dheeraj's screen? Yes. Can everyone see his screen?
यस नो तो बोलो भाई। Yes, sir. गुड। तो धीरज बताओ क्या है स्क्रीन पे? हाँ, तो दीज आर ऑल द, ये जितने भी हमने ट्रेड्स लिए हैं मंडे इवनिंग से, हम्म वो सारे के सारे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो स्टॉप लॉस सजेस्टेड है सब में 15,000 रुपीज का है। हम्म और टारगेट मतलब जैसे सर ने हाफ बुकिंग और फुल बुकिंग का डाला है उस हिसाब से डाला है। तो मतलब एक्चुअली दीज आर कंजर्वेटिव नंबर्स, इनके ऊपर भी गया है ऑप्शन। नहीं, बस और उतना ही मतलब कंसिडर करते हैं जितना हुआ है। ठीक है। सो नेट कितना बना पीएनएल? ऑप्शंस का नेट पीएनएल है 53,000 रुपीज है यार। ओके। एंड बाकी टोटल कितना है? ऐसे बस खींच दो, नीचे दिखाएगा सामने से ही सेलेक्ट कर लो पीएनएल का, वो ऐसे ही दिखा देगा। हाँ, ऊपर से सारे नीचे तक। नहीं नहीं, वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, वो सारे सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट दबा के नीचे ले जाओ ना यार, शिफ्ट दबा के ऊपर। एक्सेल नहीं आती है क्या भाई? नॉट लाइक दिस। एनीवे चलो छोड़ो। बट गाइस सी दिस इज समथिंग। ठीक है, जो रहने दो धीरज। एनीवे वी कैन मेक द कैलकुलेशन हियर। सर मेरा है ना एक्सेल उड़ गया है एक्चुअली पीसी में से, तो ये गूगल डॉक्स के हाँ, ये अंदर कर गूगल रहा हूँ डॉक्स मैं। का है, बट 40,000 हो रहा है, 40,000 हाँ, हो रहा है क्या? कुल मिला के द मैसेज आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट if you size your positions properly, do the entries and exit as it is told, you will definitely make profit. Problem starts happening and capital कितना required होगा इन सब में? I don't think किसी में 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा होगा। Yeah. So 2-2.5-3 लाख के capital में if you are making in a week 30-40,000, it's a big amount and good amount of profit. And एक और रीजन था ये करवाने का, क्योंकि इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर इन लॉस, उनका लॉस कितना था? समवेयर अराउंड 25,000 to 1 lakh डिपेंडिंग, अपार्ट फ्रॉम फ्यू आउटलायर्स लाइक रौनक का लॉस बड़ा है, एक आई गेस गिरीश वाज आल्सो देयर, नॉट इन द कॉल, उनका लॉस बड़ा है। एंड दैट्स मेनली अगेन कम्स डाउन टू रिस्क मैनेजमेंट, कि जब आपके लॉसेज हो रहे हैं, इफ यू कंटिन्यू टू लेट देम रन, दे विल रीच अ पॉइंट जहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि अब उसके बाद बुक करना है या रखे रहना है। इसीलिए रिस्पेक्ट द एसएल एंड एवरीवन शुड हैव देयर ओन स्टॉप लॉस इन माइंड, कि हाँ भाई इस मनी स्टॉप लॉस, कि हाँ इससे ज्यादा तो आई कैन नॉट लूज इन अ ट्रेड। यू शुड ऑलवेज हैव दैट इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली यू शुड साइज योर पोजीशन, अकॉर्डिंगली यू शुड बुक once that limit is reached, and if you do that you will be able to make good amount of money. If you're not doing that, then कितना भी calls ले लो, सही ले लो, गलत ले लो, you will not be able to make money. So that's the message I want to send across. Yeah, Gautam has joined. सर इसी को लेके एक डाउट था। हाँ, So like my capital is 4 lakhs. So at any given point of time, I only take positional trades. तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि at any point of time, my total, like for example, my total shorts, the stop loss of those combined should not exceed, let's say 10% of my capital, which is 40,000. तो सर ये ठीक स्ट्रैटेजी है कि पहली बात तो 4 लाख 5 लाख में अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है आपका गैप अप्स एंड गैप डाउन्स का, ठीक है, which is a big risk. And when you are trading with a 4-5 lakh capital, it's just like you are taking one lot, that is your capability, right? 5 लाख में मुश्किल से एक लॉट ही आ पाता है, कुछ तो एक लॉट भी है, ONGC जैसे स्टॉक्स तो एक लॉट भी नहीं ले सकते हो, वो मतलब कर देते हैं। हाँ, मतलब कि इफ यू मेक अ बिग लॉस, नेक्स्ट टाइम आप वो एक लॉट भी नहीं ले पाओगे। Getting my point? So in that case, whenever you have such a capital 4 lakh, 3 lakh, 5 lakh तक, ठीक है, and you are trading positional trades in futures, you should always hedge it.
irrespective of the stop loss, you should always hedge it because of the reason कि you don't have the capability कि अगर एक loss हो जाए तो next trade you will not be able to take. यस सर, ये पोस्ट हेज ही है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास लास्ट हेजिंग के बाद वीक 40,000 का अगर तुम स्टॉप लॉस रख रहे हो तो गलत है. 4 लाख में अगर तुम 40,000 तुम सोचो 2 ट्रेड गई तो अगली बार से तुम देखो स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि अगर 4 बार 5 बार हिट भी हो जाए तो इट शुड नॉट अफेक्ट योर ट्रेडिंग एंड योर एबिलिटी टू टेक अ ट्रेड. अगर 40,000 का तुम स्टॉप लॉस रख रहे हो, एक स्टॉप लॉस ही हिट होगा तो अगली बार से तुम्हें दिक्कत हो जाएगी ट्रेड लेने में. नहीं सर, वो कंबाइंड स्टॉप लॉस है. जैसे लास्ट वीक मेरे हाँ. पास 2 स्प्रेड्स पड़े थे, निफ्टी बैंक निफ्टी, 4 के स्टॉप लॉस ईच. एक फ्यूचर शॉर्ट पड़ा था बैंक निफ्टी विद हेज, वो भी उसका अराउंड 10K का स्टॉप लॉस था. और उसके बाद मेरे पास एक टीवीएस मोटर की पुट पड़ी थी और श्रीराम की. सर ऐसे मिला के था 40. Combined is fine. Yeah, obviously. Because फिर then that comes down to the calls कि अगर चारों गलत हो गई तभी गलत होगा. हाँ Right, सर so वही. that's fine, that's okay. Because you are anyway taking 10,000 से ज्यादा का risk नहीं ले रहे हो, तो that is okay. सर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल अपनी वो पोजिशनल स्क्वायर कर दी थी क्योंकि वी वर लुकिंग के पोटेंशियल बाउंस बैक आके हमें दोबारा एंट्री मिलेगी, क्योंकि मैंने जो फ्यूचर लिया था वो काफी नीचे लिया था. कोई बात नहीं. और एक और तो चीज है इम्पोर्टेंट अबाउट योर एक्सपेक्टेशन कि कितना प्रॉफिट बनाना है. अब व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद 4 लाख के कैपिटल, एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, so you don't have luxury of trailing always. Okay, एक लॉट में ट्रेल करना it's a bit difficult because फिर most of the time क्या होगा कि you will end up making no profit no loss, yeah? If you just trail it to the cost and you will not be able to book. So अब 4 लाख 5 लाख की कैपिटल when you are trading in one lot, also keep your profit targets to somewhere around 2% 3%, not more than that. ठीक है, 2-3% से ज्यादा मिल गया. अब जैसे मोमेंटम में है, गिरे जा रहा है, आपने अभी तुरंत ट्रेड में एंटर लिया, तुरंत वो 5% गिर गया, दैट इज फाइन, बुक इट आउट. ओके, एक बार कोई पोजीशन 2 दिन 3 दिन चल रही है, 2 दिन 3 दिन से चल रही है ना, आपका ऑलरेडी 3% प्रॉफिट चल रहा है, तो फिर उसमें रिस्क लेना फॉर नेक्स्ट डे आई विल नॉट एडवाइज. क्योंकि तुम्हारा जो कैपिटल है उसके हिसाब से अब तुम 3% प्रॉफिट बना रहे हो, व्हिच विल कम समवेयर अराउंड 12,000 15,000. There is no point taking one risk because gap down gap up में 2-3% का ऊपर नीचे हो ही जाता है. उठने वाली है. In those cases you should look to book your profits. Intraday में अगर you are seeing the momentum, in that case you can keep trailing. But once you carry the position, that position is giving you the 2.5-3% 4% का return. Exit it. Close it, exit it. If it is just one lot, if it is 2 lot, then it's easier. एक lot book करो, एक को trail करो, ठीक है. और सर एक और क्वेश्चन. तो जैसे अभी ट्रेंड सेट हो गया है, फॉर एग्जांपल वी नो अब मार्केट नीचे जाएगी, तो शुड वी लाइक टेक मोर रिस्क? नहीं यार, रिस्क डिपेंड्स क्योंकि सर प्रोबेबिलिटी हाई है प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, जो तुम्हारा मार्केट से बना हुआ पैसा है, अगर तुम उस पे रिस्क ले रहे हो इट इज फाइन, बट इफ यू आर ऑलरेडी इन लॉस, इन दैट केस यू शुड नॉट. फर्स्ट, because psychologically it affects a lot. So first thing that you need to do is come in a good profit and then you can take risk. But unless you are in good profit, there is no point taking additional, because additional risk लोगे तभी ज्यादा पैसा बनेगा. That is true, but at the same time you should have the capability to take that additional risk. If your capital doesn't allow you to take an extra risk, no point taking that. And no, So not market, even when no one knows. Market, no one knows. Okay, there is always a probability. We say that the trend is down right now, everything is established, but एक कैंडल तुम्हारी जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दे स्ट्रांगली, ट्रेंड चेंज हो जाता है, and then a lot of people get trapped and that will give you a very good short covering. So you should, that is the reason you should always trail, you should always learn to book your profits when you have thought it is done.
मार्केट में यू कैनॉट से एनीथिंग 100%. ट्रेंड इज डाउन. अभी क्या पता मंडे को तुम्हारा अगर ऊपर आ जाए, नेवर नो. एक्सपेक्टेशन है कि हाँ नीचे रहेगा, ठीक है. बट पोजिशनल ट्रेड लेने में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन ओवरनाइट. दैट कैरिंग पोजीशन ओवरनाइट इज अ बिग रिस्क, and that you have to manage either by hedging it, or you should have good position size depending on your capital. At times also, like you said, कि अभी तुम्हें पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रेंड स्ट्रांग है, in those cases it's even good to take put options, right? क्योंकि उसमें तुम्हारा तो दूर ऑलरेडी की और स्ट्राइक हाँ, तुम पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है. अगर तुम्हें लगता है कि 10% कोई मार्क चीज गिरेगी, 5% आउट ऑफ मनी वाला पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है. और क्रिएट सम, जैसे मैंने आप लोगों को ये स्ट्रेटजीज वाले ट्रेड्स दिए अभी, जो कि यूजुअली मैं देता नहीं हूँ, अभी इस बार दिए क्योंकि सबका ऑलमोस्ट लॉस ही चल रहा था, इसलिए आई गिव दैट. सो यू कैन टेक सम सच थिंग्स लाइक दैट. उसमें प्रॉफिट कम होगा बट एटलीस्ट लॉस भी पहले ही पता रहेगा, इतना ही होगा, चाहे छोड़ दो, ठीक है. सो थिंग्स लाइक दैट यू कैन डू. बट overall point is risk management is most important. Unless you manage your risk smartly, you will not be able to make money. एंड सर सिंस नेक्स्ट वीक अब हमारी स्टॉक्स की एक्सपायरी है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर स्टॉक वाले ट्रेड्स ना लूं, आई ट्रेड ओनली इन इंडेक्स. तो अब मैं इंडेक्स की पोजीशन को इंक्रीज कर सकता है. एग्जांपल आई कैन टेक इंडेक्स में ज्यादा का लॉस, या शुड आई कीप इट सेम कि 10,000 इंडेक्स में पर ट्रेड लॉस? नहीं, इतना ही रखो, क्यों बढ़ाना है? अभी थोड़े ना तुम्हारा 4 लाख 8 लाख हो गया है. Why will you take that risk additional? कैपिटल थोड़े ना बढ़ा है. रिस्क इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल. जब 4 लाख 8 लाख बन जाएगा तब 10,000 को 20,000 कर देना. ठीक. एंड सर व्हेन डू यू लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, सो व्हेन डू यू ऐड टू दैट पोजीशन? So Like, do you even always add on the trend line के पास. Okay, so high one अगर क्या बोलते हैं बुल ट्रेंड चल रहा है तो तुम्हारा लो 1 लो 2 लो 3 पता है ना क्या होता है वैसे, लो 1 लो 2 लो 3. तो यू ऐड एट लो 1 लो 2 लो 3. बेयर है तो हाई 1 हाई 2 हाई 3. दैट्स व्हाट यू ऐड. Anyway, so Raunak, you can also share your screen. देखते हैं FNO में बाकी में क्या चल रहा है. शेयर नहीं हो रहा मेरा. ये क्या नाम है, ये पहले क्लोज द. ओके, आई शेयर. कैसे होता है सर? ये देखो ऑप्शन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का. हाँ, तो वाइट डेस्कटॉप 1 वाइट बोर्ड क्या करूँ मैं? डेस्कटॉप 1. ओके. रिज्वाइन करना होगा मेरे को, मैं कर रहा हूँ. Anyway, तो गाइस देखो कुल मिला के रौनक is coming, will see the how much, but I want to hear from you all कि any difficulty that you guys are facing. Hi sir, Anu this side. Yeah, Anu. Sir, so what I've noticed in my 1 month of being here is that your conviction is always right. अब होता क्या है कि हमारा टेस्ट हो जाता है in terms of patience and हम कितना loss bear कर सकते हैं. Yeah. So what I wanted to talk to you about also was that जैसे अब on Friday what happened was आपने आरती का short trade लिया SL hit हुआ, फिर आपने एक निफ्टी का दिया SL hit हुआ, फिर आपने कहा एकदम रिवर्स करके दूसरा ट्रेड ले लो, राइट? So what happened was that I had a certain figure in mind that okay, if I hit this much loss or profit, I will stop trading that day because I used to end up over trading. So I didn't take trades after that day, and then as per your conviction,
the market did fall and the positions we had, अगर हम उसको as it is रखते तो we would have ended up in having a good day. Now what I wanted to know is that capital थोड़ा कम है, running in losses, and so if we can hedge most trades that we take. Now on the group I think Dheeraj or someone had written कि intraday trades आप बोलते हो कि hedge नहीं करना चाहिए because उससे इतना point नहीं होता. कोई मतलब But sir, मेरा बस ये point था that you know if like I know your conviction is very very good. Like in this 1 month I have known कि ठीक है थोड़ा patience test होता है, लेकिन आपका जो logic है वो 90% of the time सही होता है. So even if we, is it okay if we end up hedging most trades, because that way I felt I could be in the trade longer. नहीं, that is wrong. Not taking trades because of hedging. If you are holding longer, that is not wrong. Size your positions. Take small positions. जैसे मैंने आरती का फ्यूचर शॉर्ट मारा और एसएल हिट हो गया, अब मेरा ये था आरती इंडस्ट्रीज, हाँ अगर मैं तो जब उसमें आपने पता है तुम हेज करके भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो इंट्राडे में अगर तुमने हेज किया होता ज्यादा तुम्हें कुछ लाइक अगर ऊपर जाता, से फॉर एग्जांपल देखो हेजिंग यूजुअली द वे यू डू इट इज बाय सेलिंग आउट ऑफ मनी कॉल और पुट, दैट इज द बेटर वे ओके टू हेज. उसमें यू बेटर फॉर पोजीशनल राइट, सॉरी हाँ, जिसमें यू गेन मनी बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू डिके, टाइम वैल्यू मोस्टली. इंट्राडे में दैट इज there is not so much decay in terms of time that will give you money. The mainly in intraday you make money because of the movement of the security in your direction. So fair enough. Like ये positional के लिए तो perfect है. Like मैंने थोड़ी strategies try भी करी हैं over the last few months. So always selling the option gives you the advantage of time value, time decay, like you said. अब मैं क्या सोच रहा था, I don't know if I'm right or wrong, but if I'm shorting, you can't buy put option or call option. Also, you're saying I can't do that. No, sir, I'm saying I'll tell you why. I'll tell you the reason why. Because a trade going wrong, hitting your SL, say तुम जैसे आरती भी shorted, उसने SL hit किया, ठीक है, और तुमने वहां पे मान लो कॉल ऑप्शन लिया होता, ठीक है, और आरती इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एसएल हिट करके अगर साइडवेज हो जाता तो तुम दोनों में लॉस कमाते, ठीक है. सेकेंडली व्हेन यू हेज इट, व्हेन यू कैन होल्ड इट, दैट्स द लॉजिक यू आर यूजिंग. होल्ड करने के लिए अगर तुमने कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शन बाई किया है एंड यू आर होल्डिंग, यू आर एक्चुअली लूज बोथ साइड्स इन योर आल्सो. दैट बाइंग ऑप्शन विल गिव यू मनी ओनली कि वो कब लेते हैं जब आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ ये ऐसा पोजीशन पे मेरा स्टॉप लॉस है जो अगर हिट हो जाता है तो देन देयर विल बी अ शॉर्ट कवरिंग. ओके नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने आरती एक लेवल पे शॉर्ट किया, ठीक है, अब मैं ऊपर जाएगा तब तो कॉल लूंगा नहीं ना, तब तो उसके बाद हो सकता है नीचे आएगा तो मैं कॉल में भी मरूंगा और मैंने शॉर्ट में भी मेरा रिकवर नहीं होगा. मेरा ये पॉइंट है, जैसे एक लेवल पे जब मेरे को लगता है आरती गिरने वाला है, मैंने फ्यूचर शॉर्ट मारा और उसी टाइम कॉल भी ले ली कि अगर रिवर्सल होएगा और मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं शायद 1-2 रुपए और रुक सकता हूँ. बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट like I'm saying your conviction is very good. अब for someone like me who doesn't have a very big capital, हमें काटना पड़ता है because like you said एक फिगर दिमाग में रखो. When I had just joined, I didn't know this logic, so I ended up making big losses. अब क्या होता है, छोटा फिगर है, if you meet that निकल जाओ, कुछ नहीं होता, बाद में ट्रेड मिल जाएगा. तो लेकिन जैसे if I'm buying it at the same time, like I shorted आरती और मैंने उस टाइम कॉल ले लिया, अब रिवर्स जा रहा है तो उनको कॉल थोड़ा पैसा देगा जिसकी वजह से मैं शायद 1 or 2 रुपीस रुक पाऊं. नहीं दैट इज रॉन्ग यार, बिकॉज योर कॉल ऑप्शन तभी तुम्हारा कॉल ऑप्शन लेके तुम वेट कर पाओगे ना जब ऊपर के डायरेक्शन में वो मूवमेंट दे रहा है. अगर वो ऊपर जाता ही नहीं है, स्टॉप लॉस हिट करके वहीं रह जाता है, तो तुम क्या करोगे कॉल ऑप्शन का, वो भी लॉस देगा. मेरे को आपकी बात समझ आ गई. मैं कह रहा हूँ जैसे मेरी, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. इट मतलब इट्स बेटर टू जस्ट बुक योर लॉस एंड it won't end up your loss. That is the, see, there is no way where you will not book your loss. You will always book your loss. That is the truth. It's not at all possible कि आपका loss ना हो. What you have to maintain कि when I lose less, and when I make, I make. That's the only thing you have to manage. And देखो रौनक ने भी ये स्क्रीन शेयर करी है. So it contains all the trades. जहाँ पे इवन जैसे आरती लाइक ट्रेड जहाँ पे मैंने बोला कि निकल जाओ, still after that you are in profit.
अंडरस्टूड राइट. सो इट डजंट मैटर. देखो 10 कॉल में से अगर तुम्हारी एक कॉल 2 कॉल स्टॉप लॉस हिट होती है, एंड इफ यू हेजिटेट इन बुकिंग द लॉस इन 1-2 ऑफ दोस कॉल्स, व्हाट हैपेंस कि बाकी 8 का प्रॉफिट आपके वही 2 निकाल लेते हैं. फेयर इनफ सर. और हेजिंग में मार्जिन भी जाएगा, वो भी बिकॉज़ कैपिटल इतना है नहीं. हेजिंग इंट्राडे में कोई मतलब ही नहीं है यार. देयर इज नो ठीक पॉइंट. है. हेजिंग देखो बाइंग, अब देखो हेजिंग में 2 चीजें लाइक आई सेड. एक होता है सेलिंग आउट ऑफ मनी ऑप्शंस, और एक होता है कि हेजिंग बाय बाइंग. बोथ आर देयर. You hedge by selling out of money options when you expect a slow move in your direction. ठीक है. समझ गया. जब मोमेंटम नहीं है बट तुम्हें हाँ. पता है एक रेंज बाउंड है. हाँ, पहुंचेगा. मतलब रेंज बाउंड नहीं, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ गिरेगा, बट हो सकता है उतना फास्ट ना हो. सर इसलिए तो टाइम देके का हम हाँ खाएंगे ना. एग्जैक्टली. हाँ. बाई आउट ऑफ यार क्वेश्चन में लिखा यू बाई ऑप्शंस टू हेज कब, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये मेरा स्टॉप लॉस, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऐसे लेवल पे है कि जो अगर हिट होता है देन इट विल सेट अप अ ह्यूज रिवर्सल. इन दैट केस यू बाई ऑप्शन बिकॉज यू आर लाइक कि ठीक है ये ऐसा मेरा पॉइंट है कि अगर ये अगर हिट हुआ तो मतलब फिर ऊपर ही जाने वाला है. ठीक है. इन दैट केस यू बाई because you are expecting a massive short covering quick move. In that case the option that you will buy, that will give you a good return. Okay. But if you are just expecting ki market is going down, you have shorted it and you want to hedge it and you don't expect a very fast move, in that case you sell out of money. ठीक है. So buying option always when you are expecting a very fast move, else don't. Anyway, Sir, can we do one thing, sir? जैसे हमने आरती is like 1250 पे अगर हमने शॉर्ट किया है and our stop loss is 1200, तो हम 1220 या 1230 की let's say कॉल बाय कर लेते हैं, and when 1200 if it comes तो हम उसको सिंथेटिक बना देते हैं पुट सेल करके, तो वो मार्जिन भी जीरो हो जाएगा. स्टॉप लॉस तो मैं पहली बात इंट्राडे ट्रेड में दूंगा ही नहीं कि नहीं, 1200 से positional 1250 हो, वो तो होने वाला ही नहीं. सर वो हमें एग्जांपल है sir. हाँ. सो वो अगर एग्जांपल सही देते हैं ना. अब अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आरती लाइक समथिंग आई गेस 600 या 800 का लॉट साइज है उसका, व्हिच इज लाइक 25-30 हजार. अगर 25-30 हजार का स्टॉप लॉस का ट्रेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली इट विल बी अ स्विंग ट्रेड, एंड व्हेन इट इज अ स्विंग ट्रेड यू हैव टू hedge by selling out of money options. So you bring down that 25-30 हजार to 10,000 15,000 by selling out of money options. That's how you have to trade. सर आई एम सेइंग कि अगर हम स्टॉप लॉस पे अपने स्टॉप लॉस पे जैसे आया आरती इंडस्ट्रीज, हम वहाँ पे एक सिंथेटिक फ्यूचर बाय कर लें यूजिंग कॉल इनपुट, तो हमारा मार्जिन भी जीरो हो जाएगा एंड वी कैन होल्ड इट, क्योंकि वो लॉस तो उतना हो ही गया है, उससे ज्यादा नहीं होएगा. सिंथेटिक फ्यूचर में तुम्हारा मार्जिन रिड्यूस नहीं होता. करके देखना है एक बार. सर किया हुआ मैंने सर, उसमें किया था मैंने, शेयर करो, बैंक दिखाओ निफ्टी इसको. शॉर्ट किया था फिर सिंथेटिक बनाया था, जीरो हो गया था मार्जिन. उसका देखो मार्जिन कितना है, दिखाओ मुझे. जीरो हो शेयर गया करो था इसको. सर. नहीं होगा. दिखाओ तो मुझे. हो ही नहीं सकता. सर मैंने किया था इसलिए देखो बता रहा हूँ. देखो मैंने करो, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ. नहीं होगा. सर अभी मैं एक सेकंड आपको चेक करके सिंथेटिक बताता हूँ, फ्यूचर क्योंकि का मैंने ये लाइव मार्जिन में किया हुआ है. देखो, सिंथेटिक फ्यूचर का मार्जिन जो होगा तुम्हारा, ठीक है, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द फ्यूचर्स का मार्जिन. अब अगर तुम ये बोल रहे हो कि एक मैंने फ्यूचर शॉर्ट करा है और एक सिंथेटिक फ्यूचर में लॉन्ग लिया है, तो बोल रहे हो कि अगर तुम्हारा मार्जिन जीरो हो जाएगा. हाँ, वहां मार्जिन जीरो होता है. हाँ, वही तो कह रहा हूँ सर. अच्छा, वहाँ वहां नेट जीरो मार्जिन होता वहाँ है. जीरो हो जाएगा. हाँ, लेकिन वहां पे क्या होता है, सिंथेटिक फ्यूचर बनाने में एक ऑप्शन तुम बाई भी करते हो, राइट. So if in that case your other side, again क्योंकि you are buying an option, the other side is there is a no momentum, movement. In that case you end up making net loss on the net position. So that's why it is not advised. सर कैसे, बट हमारा वो तो न्यूट्रल हो गया ना. नहीं डेल्टा भी create न्यूट्रल हो करना, गया वो हमारा. इंट्राडे में तुम्हें न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में बोथ सिंथेटिक फ्यूचर एंड ये जो फ्यूचर है दोनों के डेल्टा में कोई डिफरेंस नहीं होता है. बट पोजिशनल में देखो तो ऑप्शन में हमेशा एक टाइम वैल्यू डिके होगा, जबकि तुम्हारा जो फ्यूचर का टाइम वैल्यू डिके होता है इट्स नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट मिनिमल. बट वो टाइम वैल्यू वहां से आ जाएगा ना सर, जब हम पुट बेचेंगे सिंथेटिक नहीं, बनाने दोनों का में. सेम नहीं होता है ना भाई. नहीं होगा सेम ना, सर. सेम स्ट्राइक्स होने के बाद नहीं बात सेम भी होगा. नहीं होगा, सेम नहीं होता है.
क्योंकि एक बाद में इन द मनी बन जाएगा और एक तुम्हारा आउट ऑफ मनी रहेगा, राइट? इसलिए दोनों का डिफरेंस तो होता है। सर बट एक दिन होल्ड करने का मैक्सिमम 500 होगा थीटा के नेट में। इंट्राडे में यू कैन डू, बट दैट इज नॉट गुड फॉर एंड सर वैसे भी ऊपर अगर से लॉस कैप करना है तो हम नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर भी तो ले सकते हैं ना, वो तो बेस्ट रहता है। एग्जैक्टली यू अगर कैन टेक दैट एंड देखो उसमें तुम्हें फायदा नहीं है ना यार, तुमने उसमें अपना लॉस ही नहीं कैप किया तुमने, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड का ले लिया तुमने, अपना प्रॉफिट भी तो कैप कर दिया है ना, उसमें तुम्हें फायदा क्या है? जैसे हमने देखो सर जब हिंडाल्को ट्रेड का वापसी फ्यूचर हमने करने लगे। खरीदा था फेब का, ठीक है, उसका क्या फायदा हुआ? उससे तुमने उसको जब तुमने बुक किया तो तुमने उसको पहली बात तो तुम्हें बुक करना ही पड़ेगा एक टाइम पे, यू कैन नॉट कीप कैरिंग इट, ओके? Because if you keep carrying it and you just acquire both of them at the same time, okay, then in that case तुम्हारा जो जिस टाइम पे तुमने एंटर किया जो लॉस था, that is the loss that you are locked in, okay, but there is no profit loss, there is no benefit of buying the future apart from that you were able to lock the loss that you are making, ठीक है? So if you have to be in profit, what you will do कि उसको कहीं exit करोगे and then again you will be left with the naked position like the same way we had in Dalco. हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया, फिर हमने वो प्रॉफिट निकाल लिया, तो हमारा इधर हम ऐसे ही थे नेकेड, राइट? तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो तब फायदा है। ये जैसे हमने डाल्को में क्यों खरीदा था, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग हम 510 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 500 पे खरीद लिया कि चलो 10 रुपए तक देखते हैं, लेकिन अगर 510 से भी ऊपर गया तो विल एग्जिट। हुआ क्या, 510 के ऊपर वो गया, एक टिक मारा और हमने एग्जिट मारा, राइट? तो जब तक वो फ्यूचर था तब तक तो लॉस कैप था, बट वो फ्यूचर निकालोगे भी तो कभी रखे थोड़े ना वो 511, 21, 50, 60, फायदा क्या हुआ ऐसे ट्रेड का? सिर्फ आपका कैपिटल फंसा है। एनीवे, सो रौनक कितना प्रॉफिट बना भाई हमारा? फ्यूचर्स में बना है 53,000 ओके, एंड ऑप्शंस? वर्सेस 1 मिनट मैंने कैलकुलेट किया है 8,790 जिसमें 2 ट्रेड्स भी रनिंग है। ओके, इसमें तुम्हें जील नहीं डाला है क्या? अच्छा चलो पुराना था, छोड़ो। जील पहले का था ना, तो हाँ मैंने ठीक है, था। ये सारे सिर्फ इस वीक वाले ट्रेड है। हाँ, जब से बोला है आपने। ओके, तो भाई देखो, अब हमने अगर इंडेक्स और ये एफएनओ देखो तो टोटल इफ यू सी इन दिस वीक अगेन ऑन द कॉल्स यू कुड हैव इजीली मेड समथिंग लाइक, ये हो गया कितना, 54,000 60 इधर, हाँ 54 और 54 इधर, उधर 9, 62,000, 63,000 उधर हो गया, एंड देन सेम ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 के आसपास इंडेक्स में, तो अराउंड 1.2 लाख यू कुड हैव मेड दिस वीक अलोन। अब आई एम नॉट सेइंग यू मेक 1.2 lakhs, बट अगर 1.2 lakhs पॉसिबल है तो उसका 50% तो बनाओ, 60,000 तो बनना चाहिए कम से कम प्रॉफिट। एंड हियर वी आर इंक्लूडिंग ऑल द ट्रेड्स जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसको भी इंक्लूड किया है, जिसमें ट्रेल किया है उनको भी इंक्लूड किया है। कितने ट्रेड्स तो इसमें जो वेबिनार में डिस्कस किए थे वो तो इंक्लूडेड भी नहीं, हाँ नहीं, राइट? सो if we are making in 1 week based on the call, if the expected profit is 1.2 lakhs, so it will, at least you guys should make 50,000-60,000 out of that minimum. अब बना कितना है और किसने कितना बनाया? गौतम, how much have you made? Sir, तुम्हारा लॉस है वैसे मुझे पता है, बट बताओ। yeah, I know. Actually, I took a couple of trades by myself as well. तो उस वजह से my Infosys position gave me a lot of loss. Yeah. I did not know how to manage it honestly. देखो समझ में नहीं आया मैनेज उसको manage वाला कैसे एक करूं। चीज वो मैं बता देता हूँ। kept on psychologically मेरे SL हिट होते गए I thought 1920 के नीचे एग्जिट कर लूंगा। सडनली वो गैप डाउन हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर होल्ड, थोड़ी देर, वही दैट अब देखो ट्रेड मैनेज करने की एक चीज से बताता हूँ। Yeah. A trade can be managed only up to a certain point, but after that you will have to accept कि हाँ I have made a mistake। जैसे हिंडाल्को हमने एक टाइम तक मैनेज किया, कोशिश की, बट उसके बाद बुक किया लॉस, क्योंकि you cannot, भगवान थोड़े ना अपन की we can manage a loss making trade and convert into profit unless and until you have infinite capital, that is never going to happen।
Okay, and that too, capital will help you only just take another trade, which will recover the losses you are making in the current one. But once a trade goes wrong, it's not possible to manage. And that's why there is a stop loss. Once you hit a stop loss, exit. वो जो होता है ना अपने मन में कि नहीं मुझे लॉस नहीं बुक करना, उसके चक्कर में you guys end up making big losses. Don't do that. And don't take trades which are not suggested. सर मेरी अगर ट्रेडिंग के हिसाब से मैं देखूं तो आई एम ऑलमोस्ट टेकिंग 90% ऑफ द ट्रेड्स दैट यू गिव And still you are making loss. That is what is the problem. For example, like the other gentleman was also mentioning कि अभी फ्राइडे को इकट्ठे शॉट्स हमने लिए, आरती का लिया, देयर वाज भारती एयरटेल का लिया था, भारती एयरटेल बाय द वे, बट वो दोनों हम निकल गए ना, वो छोड़ो, वो तो दोनों यहाँ मेंशन है, दोनों में तो हमने कुछ बनाया ही नहीं. सम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग कि जब दो तीन बार क्या, इनफैक्ट काफी बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, बाय द टाइम यू गिव कॉल ऑफन क्या होता है कि कुछ मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है उसमें, एंड वी एंड अप, अगर शॉर्टिंग है तो थोड़ा सा ज्यादा लोअर लेवल पर शॉर्ट हो जाता है, या बाइंग है तो थोड़ा हल्के लेवल ऊपर पर बाय होता है, एंड वहां से एसएल जब हिट होता है तो लॉस का फिगर थोड़ा ज्यादा आ रहा है. एंड हमारे एसएल्स बहुत सेफ, व्हाट आई फेल्ट वाज कि हमारे एसएल्स, एज आई डिस्कस्ड विद यू ऑन अ पर्सनल मैसेज आल्सो, कि एसएल हमारे बहुत बहुत नियर टू दी ट्रेड ऑर्डर है, व्हिच इज परफेक्टली ओके, बिकॉज़ कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. एसएल अगर बड़ा रखोगे काफी लोग तो ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे. बिल्कुल करेक्ट सर, आई एग्री विद यू. एंड सेकेंडली फिर अगर वो लॉस हुआ तो इतना बड़ा हो जाएगा. देखो मेरा ट्रेडिंग करने का सिंपल तरीका है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे वो पहले ही पता चल जाना चाहिए, नॉट कि घर जायदाद बिक जाए उसके बाद पता चले कि अच्छा गलत है. वो नहीं होना चाहिए. गलत है तो पहले ही पता चल हो जाना चाहिए. एंड दैट इज द वे आई लाइक टू ट्रेड. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कीपिंग स्मॉल एसेट्स. लॉस हुआ ही अब सही बोला है. ठीक है. सो हाँ सर एक और क्वेश्चन था, सॉरी. हाँ सर जैसे आप फ्यूचर्स ओवरनाइट बोलते हो कि इसको रखो, ठीक है, अब क्या होता है, लाइक आई हैव हैड 1 or 2 बैड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज़ फ्यूचर में 1 or 2% में भी काफी लॉस हो सकता है. लाइक ऑब्वियसली टारगेटेड 2.5% का होता है. एग्जैक्टली. तो मैंने कई बार नेकेड ओवरनाइट किया है in positions that are giving me decent profit for the day, and then you carry it because your conviction says कि हाँ ठीक है, it should fall further as per your logic. But whenever I've carried, not whenever, but like there have been instances where I've carried a future naked overnight and it's not resulted in profits or it's given me a loss because you know वो फिर अगले दिन गैप अप गैप डाउन जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे. So जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमें दिख रहा था, लेकिन I didn't have it in me to carry a naked future overnight because I've had bad experiences with that. So again, like even if it's a 1 or 2 day trade, like do you advise hedging it because overnight naked futures in at least for me मतलब बहुत ज्यादा रिस्की लगता है. अनुज, इसलिए तो मैंने बोला ना, लाइक लॉस यू शुड ऑलवेज आल्सो हैव योर प्रॉफिट टारगेट, कितना बनाना है. फॉर एग्जांपल गोदरेज सीपी, जिस दिन ट्रेड दिया था उसी दिन शाम में बोल दिया था कि अभी जिसको निकलना है भाई निकल जाओ, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी गिविंग 5%. ठीक है. तो अब 5% दे रहा है, इफ यू स्टिल वांट टू कैरी देन ऑब्वियसली यू, इट मींस कि यू वांट टू टेक द रिस्क. ठीक है सर, एंड अगर वो रिवॉर्ड यू विल टेक द एक्स्ट्रा रिस्क, सो ईदर यू बुक दैट आउट. Right, and if you are carrying, then obviously you are taking that extra risk. Nothing can be done about that. Fair enough. अब जैसे मैं एक छोटा और एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है, लाइक बेरिश फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, क्लियर कट है, मतलब दिख रहा है कि गिरेगा, ठीक है. अब जैसे अगर मैं कोई कैरी करना है फॉर अ टारगेट, अब मैं क्या फॉलो करूंगा, लाइक यू सेइंग इफ आई एम हैविंग अ डिसेंट प्रॉफिट दैट डे, निकल जाओ, तुम्हारा काम है ना. बट अगर आई वांट, if I want to still carry it in the sense कि मेरे को लगता है कि गिरेगा, आज नहीं करनी, but in the long run, जैसे आपने TCS टाइप का करवाया, because you know conviction है बढ़ेगा लेकिन शायद अभी नहीं अगले महीने, तो in that case I have to keep my trades hedged ना. जैसे मैं अपना hedging चाहे दिन में काट दूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है आज इसका नीचे. देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं अब जैसे अभी गौतम बोले मैं क्यों स्मॉल स्टॉप लॉस रख के करता हूँ. मेरा ट्रेड करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं एक तो लॉट्स मेरे ज्यादा होते हैं, 10 लॉट 20 लॉट, तो मैं ट्रेड लेता हूँ 15-20 लॉट लिया, ठीक है. आई डोंट हेज इट देन, ठीक है. आई हेज इट ओनली
by the end of the day. Then Got it. because every trade that I take, okay, every trade, I don't Can take you the please trade mute thinking everyone कि ये एक first, swing then trade है. Though I tell you guys कि ये swing trade है, मैं वैसे सोच के नहीं ट्रेड लेता हूँ. आपको ट्रेड अगर लेता अपना हूँ कि ये डिजायर मेरा मिल गया, टारगेट है, हाँ, यहाँ got तक it, मुझे got it. पहुंचना है. अब वो ठीक अगर है. उसी दिन हिट हो गया, ठीक है, आई एग्जिट, ठीक है, उसमें आई थिंक ट्रेडिंग आधा बुक किया एंड ऑल, उस दिन नहीं हिट हुआ, सो बाय डे एंड पे मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है एंड आई हेज इट एट दैट टाइम कि हाँ अब सर समझ आ गया, 3 बस बजे ये सवा समझना 3, था. हाँ, तो 3 Got सवा it, 3 got बजे it. आई गो अहेड एंड हेज इट. सो उससे क्या होता है कि मेरा जो प्रॉफिट बन चुका है ऑलरेडी, दैट गेट्स प्रोटेक्टेड. ऊपर हेज समझ करने गया पे भाई. एक ही टाइम उस जिस समय time एंटर point करते नहीं हो हेज होगा. करने में दिक्कत है, तो मैं वो नहीं करता हूँ. मैं सर अगर ये हमेशा लॉस carry वाला करने पोजीशन है, What happened, Paras? सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर ये उल्टा है दैट इफ यू नॉट हिट आवर एसएल बट हमारा लॉस चल रहा है उस समय एंड we want to hedge it at the end of the day, do you still recommend it? No, then I don't hedge it. निकल अगर जाओ, मेरा लॉस तब चल रहा है, निकल never जाओ. hedge it. लॉस अगर मेरा चल रहा है उस समय सिंपल से हिसाब है कि मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा, या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा अपना, ठीक है, और या तो मुझे अगर डे एंड पे लगता है कि नहीं, अब जैसे मान लो मेरा कोई चीज मैंने 700 रुपए पे खरीदी है, मेरा स्टॉप लॉस 710 है फॉर एग्जांपल, डे एंड पे वो क्लोजिंग 709 के आसपास दे रहा है, आई विल एग्जिट इट. मैं थोड़े ना वेट करूंगा कि वो 710 हिट करे. ओके 710 मेरा स्टॉप लॉस है, 709 पे वो क्लोजिंग के आसपास पहुंच गया है, तो अब अगले दिन तो यार इजीली वो 709 का 718 हो सकता है. Right. So in that case, I will obviously not wait for it or hedge it or things like that. In that case, I'll exit it. I'll say क्या ठीक है, कम से कम एक रुपए कम ही लॉस बुक किया, हो गया. अब अगले दिन अगर वो गिर जाता है, my bad. तो वैसे भी जो आप कह रहे हो, अगर आप डे एंड पे हेज करोगे तो आपका जो हेजिंग है उसमें भी लॉस मिनिमम होगा ना, क्योंकि Minimum आप होगा, अगर और वो क्या करता है Exactly. कि that hedging helps you protect your profit. for the जैसे overnight मैंने risk. डे एंड पे अगर मान लो पूरे दिन मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, डे एंड पे जाके मेरा शॉर्ट पोजीशन है, मैंने आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है. अब उसका फायदा क्या होता है कि अगले दिन से अगर गैप अप है तो ये आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन विल गिव मी द मनी, जितना मैं इधर अपना थोड़ा मेरा प्रॉफिट जो कम होगा उतना इधर से आ जाता है ऑप्शन से. समझ गया Right? That makes a lot of और अगर sense. नीचे गिरता है तो एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर्स में ज्यादा पैसे बनते हैं, ऑप्शंस में उतना लॉस ही नहीं होगा. Right. So I ठीक है. still make money. ठीक है. ठीक है. So Got that's it, how sir. I hedge. I never ever hedge it at the time of entry. Never. At the time of entry मेरा सिंपल होता है कि मैं बस स्टॉप लॉस देखता हूँ, मेरे को लगता है कि नहीं भाई ये मेरे औकात से बाहर है, छोड़ देता हूँ, बात ही खत्म. Got it, sir. Thanks. सर एक क्वेरी थी इसी रिगार्डिंग, आपने जो हेजिंग की बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल वी टुक द अशोक लीलैंड ट्रेड. अशोक लीलैंड ट्रेड में 141 का आपका खुद का एंट्री था, वैसे हमारा अराउंड 140 के आसपास था. उसको हेज किया हमने इन द मनी कॉल के साथ ही, जब मैंने पूछा भी था. इट वेंट अप टू 135-36. कोइंसिडेंटली मैं उस टाइम पे देख नहीं पाया स्क्रीन, एंड इट हैज वंस अगेन कम बैक टू 138 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली. निकल लो, क्योंकि तुम नहीं देख पाए, तुम्हारी गलती थी, हाँ, टारगेट हो गया था. दैट इज द फॉल्ट. बट अब हेज किया हुआ है उधर से, हेज किया हुआ है, सो शुड वी बी कैरिंग दैट पोजीशन और नॉट? दैट इज व्हाट माय क्वेरी इज. तुम्हारा ओवर तुमने बाय किया है ना कॉल ऑप्शन, कॉल बाय किया है, और तुम्हारा तो वैसे मंडे को लॉस चलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन में वैसे ही वो खत्म हो जाएगा. हाँ, वो आई थिंक उसका डीके आ जाएगा, नेट लॉस ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता. जब तक अशोक गिरेगा नहीं, विल नॉट मेक मनी. लाइक आई सेड ना, व्हेन यू बाय ऑप्शन you make only money if the other side is strong and trending, else you will never make money. It will only act as 2 losses. That's why buying option you should use only very, kabhi when you are at a very strong, support or very important support or resistance level where you expect a strong reversal. If that is gone, that's the only case where you buy option. Or mainly on results पे also you can buy option, because results में usually you have a directional move, right? कि अगर ये साल ये वाला साइड फेल हुआ तब दूसरा साइड ही होता है स्ट्रॉन्ग. So in that case you buy option. प्रॉब्लम बस ये होती है रिजल्ट में, ये ऑप्शन खरीदने में, कि रिजल्ट से पहले for that particular script IV increases up, so options की प्रीमियम बहुत बढ़ जाती है. Then in that case also it becomes more logical to sell instead of buying.
सर रिजल्ट के टाइम तो सेलिंग इज बेटर क्योंकि आपके ओटीएम स्ट्राइक्स पे इतना प्रीमियम बढ़ जाता है वही तो वही सही बोल रहा हूँ टाइम। ना, आई भी बढ़ जाता है, इसलिए उनकी प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी अभी एशियन पेंट्स का रिजल्ट था, ओटीएम कॉल सेल दोनों इतना बढ़ गया था, एक भी लॉट अगर तुम सेल कर दो सही टाइम पे वो तो तुम्हें 15 मिनट में काफी प्रॉफिट दे देता है। ठीक है। सो गाइस देखो, द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज टुडे to tell you कि you can make money if you have a proper risk management in place. Okay, many of the trades many of you would have not been able to take because you are in loss, because your capital was low, and all those things happen only because the loss has impacted you, and the loss has impacted you because you took risk which you couldn't kind of take. If you take risk which you can take, in that case even if you may lose that will not impact your trading style. अब मेरा अगर दिन में 25 लाख का अगर लॉस हो जाता, आई एम प्रिटी श्योर अगले दिन में ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, दैट विल हॉन्ट मी. बट अगर 4 लाख 5 लाख का मेरा लॉस होता है, आई एम ओके विद दैट डजंट मैटर, इट्स लाइक नथिंग. सो सिमिलरली फॉर ईच ऑफ यू शुड नो कि हाँ मेरा अगर 4 लाख कैपिटल है तो यू नो कि हाँ 2-3 हजार लॉस में इट्स फाइन यार, इट्स ओके. So that type of risk is what you should take only. Yeah. Sir, also this week expiry है तो option की वैसे ही margin ज़्यादा बड़े होंगे stock options के लिए. हाँ मार्जिन तो बड़े होंगे यार, इस वीक तो बढ़ जाएंगे, इसीलिए तो मैंने बोला था कि इस वीक में जो भी ऑप्शन तुम्हारे एटीएम भी हैं वो निकल जाना अब उसको. जैसे अब जी का ऑप्शन जो है इट हैज नाउ बिकम इन द मनी. ओके, सो दैट्स yes sir, वो इसका ऑप्शन चला गया तो वो मंडे को या ट्यूसडे तक तो निकल ही जाना. ठीक है, नहीं तो बाद में फिर वो क्या होता है ना कि दिस बिग प्लेयर्स दे डोंट कम, एंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू स्क्वायर इट ऑफ, वो तुम्हें फिर ऑक्शन में जाना पड़ेगा, और दैट इज अ अलग वो नखड़ा है, वो छोड़ दें, वो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट्स अ बिग लॉस. ऑक्शन में अगर तुम्हें जी फिर 340 में मिला तो 340 पे लेना पड़ेगा. चल रहा है वेंचर 300 का. वो अंबुजा का एक केस हुआ था ना रिसेंटली. अच्छा, हुआ था क्या ऐसा? some retail trader got trapped in that. Yeah, so don't get trapped in all of this. It becomes really a difficult thing. Okay, option. ठीक है. Anyway, चलो let's start with today's webinar. Okay, but just keep these things in mind, guys. कि एक वीक में अगर हम 1 लाख रुपए 1,20,000 प्रॉफिट बना रहे हैं, then you guys should easily make somewhere around 50-60,000. उतना तो बनता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस थिंग. 1 घंटा तो इसी में चला गया यार. Guys, as expected, this was the direction we thought. Already US has fallen. Now this is the area of demand. Okay, so that's why this week we can see a little bit of bounce back. Maybe Monday you see a gap down, but I think that should be it, Monday and Tuesday. And then after that you should see a up move. So this week mostly I'm expecting to be a corrective week. After 1-2 days it should be a correction. Okay, before again it falls. Okay, so again it will obviously fall, but एक करेक्शन आना चाहिए. लाइक आई सेड, करेक्शंस हमेशा 2 लेग में होते हैं, ये एक लेग, ये दूसरा लेग आना चाहिए अभी. सो यूएस में भी वही है. Monday, Tuesday might be a little bit down, but after that we should see a strong bounce back, and then again the second leg of the correction will start after that. Okay, so we'll keep it on the sideways to corrective. Okay, then after that Dow Jones वेरी सिमिलर. देखो डाउ जोन्स भी आपको अगर देखो तो ये अपने डिमांड जोन पे है, या ये भी अपने डिमांड जोन पे है. तो मतलब इसमें भी आप अब देखो, ये जो विक्स देख रहे हो आप ना, ऑब्वियसली वीकली चार्ट है, दीज आर बिग पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट 1.5-2% के ये विक्स हैं. सो ऑब्वियसली दिस कैन अगेन कम हियर, टेस्ट द लोअर लेवल्स एंड देन रिबाउंड. ओके,
The same thing Dow Jones maybe I'm expecting. Obviously, if you see on a daily chart closing below this, then it becomes a different thing. But अगर देखो जैसे यहाँ पे एक बढ़िया ट्रैप था, ये बहुत बढ़िया ट्रैप है. दिस इज अ बिग ट्रैप. यहाँ पे इंसान बाई कर सकता है. एनीवे देखता है. ठीक है. फिर आपका Nasdaq देखो ऑलरेडी इन द डिमांड जोन. सो अगेन तो यूएस के सारे अगर तीनों इंडाइसेस देखो तो देख के ये समझ में आता है कि हाँ everything is at kind of a very strong support and you should see a little bit of bounce. Okay, so everything is looking sideways. अब देखते हैं यूरोप. Okay, so DAX तो looks like can still fall. Okay, there is good amount of room for it to fall. Okay, यहाँ पे जो कैंडल है that also is not something which I'll be saying कि it's a good reversal candle. but देखो एक चीज इसमें है important. like I said 3 लेग में होता है आपका फॉल. डैक्स जो है आपका साइडवेज है. अपर लेवल ये है, लोअर लेवल ये है. राइट, ये अपर लेवल है, ये आपका लोअर लेवल है. दीज आर ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है. बीच में ये आपका एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है. राइट, एंड फॉल शुड बी इन 2 legs. सो अगेन इसमें क्या है, ये अपने इंटरमीडिएट सपोर्ट पे है. एंड अगेन इट माइट आल्सो शो अ correction and then a fall finally to complete the correction here before again going up. Okay, समझ में आया guys? So this again also looks like a sideways. ठीक है. यूरो 50 देखो, सेम यूरो 50 में भी आपका ये तो क्लियर कट बेयरिश लग रहा है. ये तो नहीं लग रहा है कि ये क्या हो गया भाई. ये तो नहीं लग रहा है कि ये रुकने वाला है बिफोर दिस रीजन. ओके, सो दिस इज क्लियर कट बेयरिश. यूके देखते हैं, अगेन क्लियर कट बेयरिश. ओके, चाइना, तो चाइना ने तो ये देखो, ये आपका जो ट्रेंड लाइन था इसने ब्रेक किया था. दैट्स व्हाई आई गिव दिस कि हाँ ये नीचे जाएगा. लुक्स लाइक दैट इज व्हाट गोइंग ऑन. यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सेलिंग मिल रही है, एक छोटा सा आपका सप्लाई जोन है. ओके, एंड देन इट्स अ गुड सेल हियर. शुड कंटिन्यू टू गो डाउन फ्रॉम हियर अनलेस एंड until दिस लेवल गोज. इट शुड कंटिन्यू इट्स जर्नी डाउन. या सो राइट नाउ looks like a sell, but only below this level is a sell. Above this it's a buy. Okay, so let's see. Hang Seng अगर देखते हैं, broke this trend line, giving an up move. Okay, mostly it looks like a correction, but this correction yet is looking strong, so still you will keep it upwards only. Okay, there is no sign of reversal right now on this particular candle. Nikkei अगर देखते हैं, so Nikkei is also in its support zone. Now should start going up. Okay, so this also looks very sideways. मान लो correction बने. So जितने भी ये orange वाले हैं सब correction है, मतलब ऊपर है. Hang Seng भी ऊपर है, correction ही है, but इसको green इसलिए डाला है because this looks like an independent move rather than a part of this move as of now. ठीक है, so global indices guys clear? Any doubts? क्लियर है? हाँ सर. चलो डॉलर इंडेक्स देखते हैं क्या कर रहा है. तो डॉलर इंडेक्स ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया. डेली चार्ट देखो इसका, काफी बढ़िया है इसका. डेली चार्ट पे देखो, फर्स्ट सेकंड ये आपका बढ़िया फ्लैग एंड पोल ही है. ठीक है, जिसमें ये आपका बढ़िया ये डिमांड जोन है. ठीक है, जब तक इसके ऊपर है you'll continue to be bullish. Okay, so this looks positive. As expected, this has now started its downward journey. Okay, continue to remain bearish on this. Commodities में crude देखते हैं. तो crude में देख रहे हो अब, you see this candle. This is a very strong reversal candle forming at a very important area.
Now you see two things are very important. This candle is a very bearish candle. Secondly, it is forming at a strong resistance, so which increases its significance. And on crude, you can go short now. Okay, crude looks very good like a selling, but अब देखो इसमें सीन क्या है कि ये तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया. So अगर इंसान किसी को शॉर्ट भी करना होगा, like you will not do it here. You will wait for some time to get a smaller stop loss. Okay, पहले तो छोटा एक, अब देखो यहाँ पे देखो इसमें भी you cannot go short. Looking at this daily candle is looking good for a up move. Okay, though the weekly में हमें clear cut sell दिख रहा है, daily में हमें दिख रहा है कि हाँ there might be an up move. So this might actually form something like this. ये हो सकता है आपका लो वन हो और यहाँ पे हाई वन बने, हाई टू, हाई थ्री. ठीक है, हाई वन, हाई टू, हाई थ्री में समझा देता हूँ भाई लोगों को. So गाइस ये डाउन मूव है ना, तो इसमें क्या है आपका लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप. सो ये जो पहला आपका टॉप है इसको बोलते हैं हाई वन, ये आपका हाई टू, ये आपका हाई थ्री. सो आपको हमेशा बेयरिश मूव में यू शुड ट्राई टू एंटर हियर, हाई वन पे, हाई टू पे, हाई थ्री पे. ठीक है, so something like this I am expecting on crude to happen, and this is where you should look for an entry with a stop above this. Okay, so that's crude. So what is the relation, exact relation of crude and equity? Like उनका correlation कैसे चलता है? क्रूड और इक्विटी का रिलेशन ऐसे मत डायरेक्टली मत देखो. क्रूड का रिलेशन सिर्फ इकोनॉमी से देखो. क्रूड फॉलिंग मींस डिमांड इज ऑफ क्रूड इज लेस. ओके, and if demand is of crude is less, in that case it means that overall Business demand is scenario is poor. Okay, so that means market economies are not going to do well. Okay, economy related numbers will be bad, and that's why equities will perform bad. Yeah, yeah, ठीक है, thank you. मैंने crude और painting stocks को relate करके काफी हाँ किया वो है. तो you can do. हाँ, That's a direct लेकिन input cost. yeah, overall नहीं किया मैंने. That's why I was asking. So crude अगर गिरता है तो that is actually positive for paint stocks because that's Yeah. something they buy. Anyway, ठीक है. So अब gold देखो guys. Gold is following this short-term trend line, right? There is a trend line it is following. So looks like another down leg on gold you can see, which is almost coinciding with our markets on correction upwards. Okay, so gold में जो मुझे लग रहा है अभी इसको हटाते हैं, यहाँ से वापस एक लेवल डाउन यहाँ तक मारेगा ये बिफोर गोइंग अप हियर फॉर. ठीक है, एंड ये जो अभी गोल्ड में डाउन आने वाला है दैट इज समथिंग व्हिच शुड कोइंसाइड विद आवर इक्विटी मार्केट्स करेक्शन. ओके, सो गोल्ड अभी इस वीक के लिए इज लुकिंग बेयरिश. ठीक है, सो दैट्स गोल्ड. फॉरेक्स में देखो स्ट्रॉन्ग पुल बैक इट हैज सीन, JPY USD. Okay, but now it looks ready to fall from here. It's already reached here, looks ready to fall, this being a small supply zone. Yeah, looks like it's ready to fall. So bearish. Euro USD, you see, you should wait for this trend line to break. So it already started, but yet you should wait for this to break. Should come this week. जब डॉलर ऊपर जाएगा तो this should fall. तब इस पे will reserve our view. USD INR very clear in the terms. यहाँ अब देखो USD INR थोड़ा सा ना आपका वो है क्या बोलते हैं, ट्रिकी है. This candle if you see, ये जो कैंडल है लाल वाले, this trapped bears, and this candle that you see has kind of trapped bulls. Okay, but the trap that was made here
is more strong for the fact because the tail is very long, plus then it lies on the trend line. So the idea will be to stay bullish, but at the same time, if the low of last week goes, then it will turn bearish. So this line becomes very important. Last week के low से अगर नीचे गया USD INR, in that case Bank Nifty will start firing up. Okay, so keep a watch on this level. Last week का low USD INR पे नहीं जाना चाहिए. Right now looks bullish. Pound USD broken the trend line. This is what we are expecting in Euro USD also to happen, but this has already broken, so this is very bearish. Okay, clear guys on Forex? Any question on the global outlook scenario? The Forex पे USD INR had gone long last week after the candle had formed. मेरा entry point is about 74.21 something. So मतलब should I wait till the SL point triggers or should I exit right now? What do you suggest? You should keep that SL ना 74.1 का SL डाल के रखो. ठीक है. ये जाएगा ऊपर, ये जाना चाहिए तुम्हारा 76 77 तक. ठीक है. Forex में बहुत पैसा है भाई. Anyway, so any queries guys? Anyone? Chalo. Sir, any comments on the this related to Bitcoin as well? जो crypto का बहुत massive correction आया है, और is there any correlation over here? Dollar. Yes. Dollar बढ़ेगा, crypto गिरेगा. Right. क्रिप्टो भी तो आप डॉलर टर्म्स में बात करते हैं ना. बिटकॉइन इतना $1000 हो गया, यू नो. तो डॉलर अगर बढ़ेगा तो बिटकॉइन की वैल्यू गिरेगी, है ना. तो दिस जैसे ही आपका, अब जो लोग क्रिप्टो में, अब देखो मैं तो नहीं करता हूँ, बट फॉर पीपल हु ट्रेड इन क्रिप्टो, द मोमेंट दिस फिफ्थ वेव इज कंप्लीट, दैट्स वेयर यू शुड, इफ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर, बाय द क्रिप्टोस. They will double triple from there, because dollar after that will be headed for a very long bear market. Anyway, निफ्टी सब अपने मार्केट में क्या चल रहा. तो देखो लॉन्ग टर्म में तो बड़ा क्लियर है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ठीक है. दिस इज द ट्रेंड लाइन दैट निफ्टी हैज ब्रोकन, clearly bearish. Okay, so no doubt ki now Nifty has entered the bearish zone. Okay, also this whole break has come from this reason, which is a supply zone. So again, that is good in terms of giving you confidence to go short, but already we have seen this much fall. So अब what now? So what now के लिए ये देखो, daily chart देखो, body candle, selling, exhaustion. What is this? This sellers were, bears were in control, bears were in control. But अब देखो tail देखो, इसको बोलते हैं price action. समझने की कोशिश करो. Almost minor tail, very strong down move, right? The tail got a bit bigger. Some people again exited, some more buyers came. The tail got even more bigger. Some more buyers came. Here, buyers and sellers almost equal. So now what you are seeing, there is almost equal number of buyers and sellers, with the strength of the buyers getting strong. But will you buy here? No, because buyers are not that strong that they have got the candle to close at the top. So you will wait for additional signal. This is a strong down move. If you see a close below the low of last week, it's a clear cut short for another equal amount of move. So जितना ये move हुआ है, अगर ये close इसके नीचे होता है तो उतना ही amount of move you can expect. So 16,600 will be your target. If this level goes, last week का जो low है, if that is gone, then the next target is 16,600. Okay, so that's one thing. Secondly, long लेना है नहीं,
this type of a candle is a trading range in itself. This is a trading, अगर इसको वारली चार्ट में देखोगे तो ये आपको एक क्लियर कट आपको एक ट्रेडिंग रेंज दिख जाएगा. ये आपका एक ट्रेडिंग रेंज है, देख रहे हो, ये आपका एक ट्रेडिंग रेंज है. अब इस या तो अब ये जो डाउन मूव हुआ है, निफ्टी कैन कंटिन्यू इन दिस रेंज बिफोर इवेंचुअली रिज्यूमिंग द ट्रेंड डाउन. Okay, or secondly what it can do, it can break out of this range, maybe go a little bit higher before actually breaking this low down and again coming down. So these are the three possible scenarios, and any of that is possible. Okay, any one of it. But what is clear in all the three scenarios कि अगर लास्ट वीक का लो गया तो 16,600 टारगेट है. तो अब ये मैं फिर से रिमाइंड नहीं कराऊंगा, जब जाए शॉर्ट कर देना. ठीक है. So as of now, for the time being, what will be the trade plan in Nifty? To sit idle. अभी कुछ नहीं करना है आपको. अभी निफ्टी में आपको कुछ नहीं करना है. अभी बस बैठ के आपको देखना है कि ये क्या करती है. Next trade you will take only once it closes below 17,500 जो कि लास्ट वीक का लो है. तो 17,500 के जब नीचे जाए तो शॉर्ट करना है. 16,600 के लिए ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा. तब तक बस आपको बस देखना है कि क्या कर रही है. ठीक है, क्लियर. सो निफ्टी साइडवेज टू अप. बैंक्स बैंक्स में गाइस. सर as much as Nifty, बैंक निफ्टी में इतना फॉल नहीं आया. Is any particular reason? Yes, there is the reason. Tell me, can anyone tell me what is the reason? सर वो USD INR में जो बुल ट्रैप बेयर ट्रैप बना है वो. Anyone else? सर डॉलर डॉलर इतना, के कारण. हाँ डॉलर इतना करेक्ट नहीं हुआ ना, मतलब डॉलर इतना आपकी एडवर्स नहीं गया. हाँ, और कोई? उसमें डॉलर में इतना करेक्शन हाँ, मतलब वो नहीं तो है, बस बट थोड़ा और IT स्टॉक में वो अच्छे से ज्यादा समझाओ ना. उस चक्कर में. देखो Sir, also Bank Nifty has corrected way more than Nifty. Like if you look at the past correction. नहीं, बैंक निफ्टी इज करेक्टेड मोर. देखो सिंपल सा रीजन ये है ना, ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ डॉलर टू गो. नाउ दिस अप मूव शुड बी एन इम्पल्स व्हिच शुड बी इन 5 वे, 1 2 3 4 5. जो फर्स्ट वेव होता है उसमें उतना कन्विक्शन नहीं होता. या सेम थिंग यूएसडी आईएनआर में. इफ यू सी यूएसडी आईएनआर में भी एक तरह से आपका ये 1 2 हो गया. अब जो थर्ड आएगा ना, दैट विल बी फास्ट, and that will be fast. That's where your even banks will far faster. Okay, right now banks का भी 1 है. right now banks का ये अभी 1 है, फिर अभी बनेगा इनका 2. जब थर्ड आएगा that will be fast. So that is the reason in first wave है, not like first wave में people are not like all in. There is a little bit of participation because there would be still be a lot of people who must be taking this correction as just a correction of this up move, and they must be waiting for higher high, right? And which is also totally possible. अगर ये आपका जो हाई है वीकली, इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो देन सीधे वो नया हाई मारेगा. ओके, क्लियर है? Anyone, any doubt? चलो अब देखो बैंक निफ्टी को अगर डेली चार्ट पे देखो तो डेली चार्ट पे इसने 1 2 3 तो कर दिया है. मतलब और इसमें भी अगर देखो so there is a good amount of people who on the short side who would have been trapped. देख रहे हो ये इतना नीचे गया, already trend down था, good amount of people would have been trapped here. Now this becomes a very good zone. और ऊपर से एक्सपायरी भी आ रहा है, मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट लिया उनके पास टाइम भी नहीं है एग्जिट करने का. So you can actually expect कि अगर ये लेवल गया 37,800 का which is the high,
अगर ये लेवल गया 37,800 का, you can very easily expect Bank Nifty to go up to somewhere around 38,200. Okay, अगर ये गया तो 38,200 before obviously finally falling again below. And कितना fall होगा अगर हुआ तो again equal to this, जितना ये आपका fall है नेट उतना fall होगा जहाँ से भी रिवर्सल आ रहा है. ठीक है, so this is again a no trading zone. This is not a trading zone. यहाँ पे you will again wait and watch. Once there is a reversal, that's when you will again trade. Okay. So इस week में expiry week में only intraday trades will take on Nifty Bank Nifty. Won't take any positional trades. ठीक है. So this also view remains sideways to up. Clear, guys? Any question, anyone? Any doubt? सर अगर Any अपना question? अपना निफ्टी का या बैंक निफ्टी का हाई ब्रेक होता है देन तो हमारा ये भी हो सकता है ना कि जो हमारी करेक्टिव वेव है उसका 1 2 3 4 हो गया और फिफ्थ के लिए ऑल टाइम हाई पे जाएगा. हाँ, हो सकता है. इसलिए तो मैंने बोला कि अभी ऑल टाइम हाई, ये जो वीक का हाई अगर ब्रेक होता है, इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी वी आर लुकिंग एट अ न्यू ऑल टाइम हाई. हाँ तब हमारा वो व्यू भी अलग हो जाएगा या टुवर्ड्स जो दैट्स व्हाई वी विल नॉट ट्रेड इन दिस. ये नहीं कि इस वीक में ऊपर जाता रहे और हम शॉर्ट लेते रहे. जब फिर रिवर्सल हो जाएगा तब फिर वापस शॉर्ट लेंगे. पहले अभी नहीं लेंगे. अभी बस ठीक है बैठ के तो देखते हैं. ठीक है. क्लियर एवरीवन? चलो सेक्टर्स देख लेते हैं. फार्मा 1 2 3 लेट कंप्लीट. और इसका ये 1 2 ये एक रिवर्सल फिर वापस 3. फार्मा तो गाइस लुक्स लाइक ऐसा सेक्टर जो गिरेगा अच्छे से. This week you can see a little bit of consolidation mainly because it is on its demand zone. Plus a three leg correction is also almost done. So you can expect pharma for a rebound, and that rebound once is over again pharma you can expect now this time this to be broken. ठीक है, ये जो अभी तक ये डिमांड जोन की तरह इसने काम किया है पक्का ब्रेक होगा. ये लास्ट बाउंस है फार्मा में, उसके बाद फार्मा में बढ़िया सेलिंग आएगी एंड विल टेक दैट ट्रेड विल टेक. वीकली चार्ट पे भी अगर मैं देखूं तो फार्मा में लुक्स लाइक 1 2 और ये जितना ये फॉल है उतना ही ये फॉल होना चाहिए. ओके, फार्मा में तो अच्छा खासा करेक्शन आएगा. लेट दिस रिबाउंड कम एंड दैट्स वेयर विल लुक टू सेल सम फार्मा स्टॉक्स. ओके, the pharma is looking sideways to bullish again for this week, but after that we are expecting a big downturn. ठीक है, this is how pharma looks like. Metals rejection from supply zone. Okay, broken this trend line, so they are looking very negative. डेली चार्ट अगर देखते हैं इनका या डेली चार्ट में देखो तो यह आपका हाई 1 है, ये आपका लो 2 है. सो विल यू शॉर्ट हियर एनीवन? क्या करना है मेटल्स में? यहाँ पे शॉर्ट करना है या यहाँ पे बाई करना है? क्या करना है? हाई 2 का वेट करना. एग्जैक्टली. सो हाई 2 का कैसे वेट करोगे? हाई 2 का कैसे पता चलेगा? ट्रेंड लाइन बना देते हैं. एग्जैक्टली. हाई 2 के लिए ये आपका जो हाई है हाई 1 से कनेक्ट करो. दिस इज वेयर यू विल लुक टू शॉर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, वेट करो. अगर यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाता है देन यू शॉर्ट इट फॉर लोअर लेवल्स. क्लियर? तो अगेन मेटल्स में तुरंत अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है क्योंकि सब कुछ दिख रहा है साइडवेज टू अप. ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक लोअर लो बन चुका है. यू एक्सपेक्ट फॉर sideways movement and look for high 2 where you enter that in the direction of the trend. Clear? IT. Bye.
गाइस अगर ये लास्ट वीक का लो आईटी ने निकाला तो टीसीएस आल्सो ट्रेड विल एक्सेप्ट। ओके, अभी जो टीसीएस का हमारा पोजीशन है फैब वाला विल एक्सेप्ट दिस, बिकॉज देखो रीजन मैं बता रहा हूँ इसका। दिस होल इज वन and I'm expecting this to be two. Two is fast and furious. Okay, so this wave is okay, fine. But if it continues to go down, then it very well become something like 1, 2, 3 आपका, और ये आपका 3, 3 और 5 वेव में आपका फ्लैट फॉर्मेशन. In that case, it will go below this also. Okay, और अब obviously if index goes below this, it means all IT stocks will be beaten down. Okay, so on IT right now, if last week low goes, we are gonna exit any kind of long position in any IT stock. Okay. ठीक है, क्लियर। डेली में अगर देखते हैं तो ये अपने डिमांड जोन पे है, सपोर्ट तो मिला कुछ 1 2 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है ठीक है। हाँ, सो गाइस भाई लास्ट ये जो तुम्हारा वीक लास्ट वीक का लो है, there shouldn't be any close below this on a daily chart. अगर उसके नीचे closing होता है we exit. Thankfully we are hedged. Okay, so we can wait for the candles to close on a daily chart. If we see a closing below last week low, as simple as that, we exit. Okay, so on IT right now, let's keep it in wait and watch. Okay, but obviously it's looking very bearish as of now. FMCG. So FMCG as discussed guys, जहाँ तक तो इसको जाना ही जाना है, क्लियरली बेरिश है। अब इसमें भी इस वीक में क्या कर सकती है उसके लिए डेली चार्ट थोड़ा देखते हैं। Seen a little bit of buying reversal coming here. Okay, some buying pressure, some people now have started to buy, so now this becomes something like a sell only below last week's low. Okay, so only below last week low is where you will look to sell FMCG. As of now, FMCG looks good for a short term upward move. Okay, so again this remains sideways. Reality. Good trap here, closed below trend line. बहुत अच्छा शॉट है ये। डेली चार्ट पे अगर देखो, ये देखो कितना अच्छा बुल ट्रैप है ये। ट्रेंड लाइन पे आपको बढ़िया कैंडल मिला लॉन्ग जाने के लिए, काफी लोग लॉन्ग है, थोड़ा नीचे है। दिस इज अ good trap. Okay, so now this is something where you will look to, it's a clear cut shot. Okay, it's a very clear cut shot. Also, if you see full move has not already happened, so you can expect reality to continue to fall this week also and test this particular trend line channel. Okay, so reality is a clear cut short. Finance very similar to Bank Nifty, sideways to up. Media very clear cut short, obviously cause of zeal, that will continue to go down. Okay, this is also very clear cut short. Autos again are something which have found some buyers. Okay, so they again remain sideways to up. Clear guys on sectors? Overall negative by the way, autos week. Okay, thus for this week most of the sectors are looking sideways to up. Media reality clear cut sell. Okay, IT is something we'll wait and watch and decide the trade that we are already. ठीक है? Any doubt, any question guys on anything? No sir, clear. चलो अब यार 10 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। 4:30 से विल रिज्यूम एंड विल लुक एट द स्टॉक्स। ठीक है, 10 मिनट बाद मिलते हैं। चलो गाइस, सी यू इन 10 मिनट्स।
Hi guys, everyone back? Yes, sir. Chalo, let's continue with stocks then. सर एक बार CNX एनर्जी का भी वीकली चार्ट देखना प्लीज, उसमें रिजेक्शन है अपने रेजिस्टेंस से, तो शायद यार कुछ CNX एनर्जी देखने का कोई मतलब नहीं है, रिलायंस देख लो, डेट इज इट। बाकी अच्छा। सब बेकारी हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है। यार इसलिए मैं वो देखता भी नहीं हूँ। जैसे मीडिया में तुम्हारा PVR हो गया और तुम्हारा ये हो गया, जी हो गया, दैट्स इट। जी। वही एक ठीक दो है। स्टॉक है उसमें फिर, और ऊपर से CNX एनर्जी का कॉम्पोजिशन बड़ा खराब है, इन द सेंस कि there is a Reliance which works in direction of crude, and then there are BPCL, HPCL which work in a direction opposite to crude, फिर गैस। थोड़ा रिस्की है बेसिकली। तो वो मतलब इंडेक्स देख के you don't make any decision, that index is not a good construct. Got it. So it's CL Tech guys, देखो अगर looks clearly bearish, this candle shows that there might be a little bit of bounce, which will give you another entry in the direction of the fall, and you can then sell it for a target of 1070, but right now नहीं, अभी इसमें एक upward move आएगा, that's where you should be looking to sell. Okay, so अगर इसमें हम देखें, this is the trend line, ये ब्रेक तो करेगा ही। Okay, so ये हमें सेल करना है यार, HCL Tech we should be keeping in our watch list, इसको हमें सेल करना है। Okay, let's look for an opportunity to sell this particular stock जब भी मिले। 1200 पे इस पे एक ट्रिगर लगा के रखता हूँ मैं, 1200 आता है then we'll review it, but this is a sell, okay, not right now, but it will give us a sell sometime, so let's keep it in the watch list. Buying नहीं करना है इसमें। Coforge already sell है, clear cut sell है on a daily chart also, continue with the sell. Okay, even if someone wants now, they can sell Coforge with a stop loss above this trend line. Okay, this trend line is the stop loss. Okay, so those who want can even do take sell now also. So Coforge will continue to remain short on Coforge. ठीक है, इसमें तो बहुत नीचे आएगा यार, अभी तो अच्छा खासा इसमें अभी डाउन मूव बचा है। Mindtree, क्या सही टाइम पे Mindtree से हमने एग्जिट किया है? पोर्टफोलियो में देख रहे हो? हमेशा मैं बोलता था खरीदना है, सही टाइम पे एग्जिट, एंड सी इट हैज आल्सो ब्रोकन इट्स very important demand zone. This was a very crucial demand zone which it has broken. Mindtree looks like it will correct heavily here. IT stocks are not looking good. Mindtree is also a sell. Mindtree is a sell with a stop with Friday ka high. Friday ka high is your stop, and Mindtree is a clear cut sell. Looks like will give away a lot of gains. Thankfully, we have booked our profit. Same LTI, LTTS. LTI might see a little bit of bounce back from here, okay, because here it has a strong demand zone. This is the demand zone of LTI. So on LTI, you can see a little bit of bounce back where you will look to again short it, okay, but as of now, LTI is in watch list. Tech Mahindra, तीन मूव हो चुका है इसका, 1 2 3 प्लस देयर इज अ डिमांड जोन, सो इसमें भी एक बाउंस आना चाहिए which should be sold.
एक्चुअली जैसे नहीं अपना ये डॉलर इंडेक्स दिख रहा है कि एक बाउंस आएगा और उसके बाद डॉलर गिरेगा, सो आईटी इज एक्चुअली प्री एम्प्टिंग दैट मूव एंड ऑलरेडी सेलिंग ऑफ बिफोर डॉलर का सेल ऑफ हो. आईटी इज ऑलरेडी सेलिंग ऑफ. Okay, that's what is happening in the market. So Tech Mahindra में भी you can expect a little bit of rebound, but that will be an opportunity to sell. इसको watch list में डालते हैं, it's a sell दो. ठीक है, as of now no trade. टेकएम का डेली पे अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो अगर वहां मिल गया तो वी कैन लुक टू सेल. कौन सा? टेकएम में डेली पे अच्छा ट्रेंड लाइन एक बन रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन. This one you are saying? This one ना? एग्जैक्टली. तो ये भी इसको ऊपर आने तो थोड़ा, उसके बाद वैसे ही इसको भी वॉच लिस्ट में रखते हैं. Wipro also already has broken from its zone of demand. ये demand zone था, already broken it, looking very negative again, and a target of 580 is going nowhere. 580 तो ये जा ही रहा है, तो इसमें देखते हैं कहीं एंट्री ली जा सकती है क्या. क्या यार, क्या ये तो बहुत गिरा हुआ है, इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है. शॉर्टेड बिलो 600 के नीचे अगर जाए ना तो इसको शॉर्ट करने का. 600 के नीचे अगर जाए तो स्टॉप ऑफ 610. ओके, 610 का स्टॉप लगा के अगर 600 के नीचे जाए तभी इसको शॉर्ट करना. अगर 600 के नीचे जाए तो इसको शॉर्ट करना विद स्टॉप ऑफ 610. ओके, अब ये नहीं कि गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए 590 पे तो शॉर्ट, डोंट शॉर्ट इन. IT looks like is gone man. नौकरी also same कहानी. नौकरी का नेक्स्ट सपोर्ट है आपका यहाँ पे अराउंड 4000 के आसपास, 4100 के आसपास, 4200 के आसपास. तब तक ये गिरेगा ही. इसमें भी डेली में देखते हैं क्लियर कट सेल. ठीक है, इसका रिजल्ट कब है? 28 को है ना. हाँ, मतलब इसको अभी सेल किया जा सकता है. तो नौकरी कैन बी सोल्ड ऑफ अगेन. इसको भी हार्डली देखें, कुछ बढ़िया मेरे एंट्रीज में. ये तो आपका एक माइक्रो ट्रेंड लाइन है. ठीक है, एक्चुअली ये सेल है नौकरी. 4795 4800 का स्टॉप डाल के यू कैन सेल इट. ओके, नौकरी इज आल्सो अ सेल. 4800 का स्टॉप डाल के नौकरी इज अ सेल. ठीक है, बेटर स्टॉप इज 4852 बट यू कैन सेल इट हियर. ओके, फिर पैसेस देखो. पैसेस इज आल्सो लुकिंग बैड यार. जी. Now this is a candle where you don't want to sell. This is a one candle trading range. So you sell it below this range or above this range. So right now leave it. Emphasis को watch list में डालते हैं. LTTS gone. ये भी जाएगा आपका 4500 तक. Also sell, but अब इसमें एंट्री देखते हैं कहाँ मिल सकता है. सेल विथ ये आपका स्टॉप हो गया 5100 का स्टॉप डाल के. दिस इज आल्सो अ सेल. ओके, TCS looks bearish. एक मूव डाउन हो गया है, एक अप जाना चाहिए यार गाइस. TCS will look to exit this week. ठीक है, एक को जो अपवर्ड मूव आएगा, let's exit TCS here. Okay, it will come up and then again it will go down. So let's exit TCS in the upward move. Sideways to up है ये, जैसे ऊपर आता है इसको निकल लो. TCS से exit. खतरनाक सेलिंग इन IT. क्या सही टाइम पे निकले हैं जो पोर्टफोलियो में अच्छा खासा 1-1.5 करोड़ था इसमें. सो IT में गाइस मेरा
ऑलमोस्ट 1,25 या 27 लाख का एक्सपोजर था विच आई बुक प्रॉफिट, एंड मैंने प्रॉफिट बुक किया उसमें समवेयर अराउंड 78 lakhs स्टॉक्स में। सोचो अगर रखा होता तो वो 78 का प्रॉफिट पक्की बात है 25-30 हो गया होता। इन्फी इज ऑल्सो a sell। आईटी तो गंदा सेल है यार, इन्फी इज ऑल्सो वेरी क्लियर कट सेल। इन्फी में थोड़ा एक रिबाउंड मिल सकता है, इफ वी सी a rebound near this trend line channel we'll sell it। ओके सो इन्फी को वेट एंड वॉच में डालते हैं, विल सेल इट इफ वी सी ए ट्रेंड लाइन चैनल पे, और अगर इसके नीचे जाता है लास्ट वीक के लो के नीचे तब भी इट इज अ सेल फॉर ए टारगेट ऑफ 1685, मतलब 1700 का टारगेट के लिए ये भी सेल हो जाएगा फिर अगर इसके नीचे आता है तो आईटी लुक्स कंप्लीटली गॉन। ठीक है, इट लुक्स लाइक कि जो डॉलर में सेल ऑफ आने वाला है आईटी इज प्री एम्प्टिंग दैट, एंड डॉलर में एक हफ्ते बाद आएगा, तब तक आईटी ऑलरेडी बहुत गिर चुकी होगी। ओके सो very bad charts of the IT stocks, all are looking prone to big down moves। ठीक है, clear? Any question guys on anyone? सर आईटी में पिछले वीक काफी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल भी मिल रहे थे। इनफैक्ट लास्ट वीक हमारा ऑलमोस्ट आईटी ही सिर्फ बाय हम ले रहे थे, And और that's कुछ why भी it नहीं is ले now रहे a strong sell now, because was that acted as a trap. If you see the chart of, in say for example TCS Infi was a buy last week, right? You see Infi ka chart is a very good trap। You see this is where we bought, ये last week था 14 जनवरी आपका, और ये उसके बाद 17 जनवरी मंडे आपका ओपन हुआ, ऊपर गया, ट्रैप्ड लॉट ऑफ लॉन्ग्स एंड देन फॉलिंग। such a good trap, that's why such a good fall। yeah, and that's why it is important to trail। हमने जब डिस्कस किया था 1930 पे था आईटी, संडे को जब हमने डिस्कस किया था, वी सेड कि अगर वी सी एन ओपनिंग दिस इज अ गुड मूव अपवर्ड्स, थर्ड वेव कैन कम, विल गो लॉन्ग। We bought somewhere around 1934-35, went up to 1955। Okay, now people who did not trail, and there are a lot of you who didn't do that, they ended up making huge loss. Some of them, even I guess Gautam was one of the person who didn't book at all, kept waiting। Same was in TCS, Neelay was there। Okay, TCS also moved up, came down। Oh, that's the thing, if you are buying something, it has already moved 2% in your direction, and after that it has fallen 2% and is at your cost, and still if you are holding, फिर तो भगवान ही मालिक है यार, that's the even common sense कि you should exit। yeah, and now all of them after trapping so many longs now are falling। Again, these are the longs which fueled this short move, all these trapped longs। okay, anyway, इसीलिए ट्रेल करना इज इम्पोर्टेंट, ट्रेल करो। So Vedanta guys on its trend line, okay, we'll have to see किधर जाता है। now the market looks like आपका ये वीक साइडवेज रहेगा। मेटल इंडेक्स अगर देखा हमने तो उसमें ऑलरेडी वी सी ए बेयरिशनेस कमिंग, सो आवर एक्सपेक्टेशन इज मोर ऑन कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी एंड वी शुड गो शॉर्ट, बट एज ऑफ नाउ इट हैज नॉट हैपेंड, सो यू कीप इट इन द वॉच लिस्ट। Same is with National Aluminium, is at its trend line, so keep it on your watch list. Don't buy. Why will not buy? Because overall market texture is looking weak, so we don't intend to buy, but we don't intend to sell here also, okay, because it's at a support, and so we should look for a high one, that's where we will short it। कोल इंडिया बढ़िया रिवर्सल है, ये तो सेल करने लायक दिख रहा है। yeah, very nice। so कोल इंडिया is a sell guys, ये बहुत अच्छा, ये अगेन देखो ये ट्रैप है for buyers from where it has fallen down। okay, the stop being 164,
Stop is your 164. Okay, this is your stop. Look to buy as close to the stop. So this week being sideways to up, if Coal India gives you a little bit of upward movement, look to sell it there. Okay, stop आपका 163.5 है. So Coal India is a sell. Try to sell it as close to the stop loss as possible. Lot size बड़ा है. Sale is also a clear cut sell, but sale में stop थोड़ा बड़ा है, तो let's ignore it. NMDC is also a sell. NMDC में देखते हैं एंट्री कहाँ है. या NMDC में we can keep a stop. अब ये आपका हाई 1 हो गया. हाई 2 पे या तो आप हाई 2 पे वेट करो, आने का वहाँ शॉर्ट करो, और यू शॉर्ट हियर देन कीप हाई 1 एज योर स्टॉप लॉस. सो 145 का स्टॉप डाल के you can sell NMDC. Okay, so since NMDC में भी lot size बड़ा है, I'll say कि wait करो थोड़ा, ठीक है. Once it comes closer to your stop, that's where you sell it. Tata Steel is also a sell. क्या बात है भाई, क्या बात है. Again Tata Steel में भी आपका यही high 1 जो है आपका stop रह जाएगा, ठीक है. So high 1 is your stop. Look to sell with high 1 as a stop, ठीक है. So again if it comes up, जितना कम से कम stop हो उसके accordingly you have to sell it. सब में similar चीजें होंगी. Hindalco is still not done trapping. देखो इस Hindalco में also the signal is a clear cut sell, but volume is good, so not a very nice signal. Plus there is a trend line, so you ignore it as of now. Keep it in watch list. In zinc, nothing. JSW maybe nothing. Jindal. Ratan Money last week sell था already है, ठीक है. Continue from last week. If anyone is holding, can continue holding. Ratan Money में बहुत बड़ा टारगेट है. Okay, Ratan Money is a good. जितना ये फॉल है, जितना आपका ये फॉल है, उतना फॉल अब यहाँ से तो बनाया हुआ ऑलरेडी लास्ट वीक ही बनाया हुआ था. तो ये आपका 1500-1600 तक जाने वाला है. इट्स अ वेरी गुड ट्रेड इफ यू तो उसका कैन. ऐसे क्या रहेगा? अब अगर अभी एंटर कर रहे हो तो लास्ट वीक का हाई अपना सेल हो जाएगा आपका, ठीक है. जो लोग ऑलरेडी लास्ट वीक से एंटर्ड है उनके लिए तो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है. लास्ट वीक एक्चुअली सर गैप डाउन ओपन हुआ था. आई केप्ट ऑन ट्रैकिंग इट. But then again it tested na this trend line. You should have Yes. sorted it there. Okay. Anyway, so continue with that trade. Yeah, that is very good trade. अडानी अभी नहीं, इसको कुछ नहीं करना है. APL Apollo looks like will now give you a good down trade. So APL Apollo में guys अगर last week का low जाता है, sell with the last week का high as your SL. Okay, so यहाँ पे SLM order डाल के भी sell कर सकते हो. 937, 938 पे sell करो. आपका high जो है 988 का, that is your stop loss. ठीक है, this is also a sell. Well spun. अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है. Any doubt, any questions guys? एपीएल अपोलो के केस में सर एक बारी APL Apollo like said ना, देखो ये trend line is almost there. Okay, now this is a bullish reversal that happened here, जहाँ से ऊपर गया. Now this might be your high one for this particular downtrend. Okay, but यहाँ पे it's not very bearish yet. Okay, so you wait for a bearishness, and if it closes below last week's low, then you sell it off. Okay, or if you see a strong reversal candle from here touching this trend line, then also you sell it off. Okay, stop loss being last week का high. and जब अगर डाउट हो सेल करने जाओ, कोई डाउट हो पूछ लेना. राइट सर. ये तो यहाँ सेल है डेली चार्ट.
डेली चार्ट में भी सेल है। या so बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज आल्सो अ सेल गाइस। ओके, अब इसमें नेक्स्ट वीक का फ्यूचर हमें सेल करना है। जितने भी अभी सेलिंग करना है सबको नेक्स्ट वीक का ही, नेक्स्ट मंथ का ही करना है यार। इस मंथ का आप सेल मत करना, सेल नेक्स्ट मंथ ओनली, ठीक है। सो बालकृष्ण इंडस्ट्री, अब देखो इसमें क्या है कि या तो हो सकता है कि आपका लो वन आ गया है, हाई वन आए तो वेट करो, ठीक है। हाई वन आने का, दैट्स वेयर यू सेल इट, सो सेल समवेयर क्लोजर टू 2500। ओके, दैट विल गिव यू अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 2535 है, ठीक है। बट दिस इज द सेल। भारत फोर्ज, नहीं भी करते हैं इसको। एमआरएफ इज अ सेल। एमआरएफ ऐसे बाय द वे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है, आई एम ऑलरेडी शॉर्ट इन एमआरएफ। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, छोड़ दो इसको आप लोग, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और 1500-2000 का अंतर हो जाता है, भी हो जाए आप लोग लॉस कर लो, तो छोड़ दो इसको। So M&M will be a sell below last week's low. Only if it is going below last week low, you sell it off then. ठीक है, मतलब लास्ट वीक का जो लो है आपका 865 का, अगर उसके नीचे जाता है तब सेल करना है। तो जब चाहे उस समय यू गिव आस्क मी, आई टेल यू द सेल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, M&M will be a sell only if it goes below last week's low. TVS क्लियर कट सेल है। अब इसमें आप लोगों को मैंने एग्जिट करा दिया था एक्चुअली, आई एम ऑलरेडी इन इट। लुक्स वेरी नाइस सेल। छोड़ दो आप लोग, टीवीएस रहने दो, आई एम ऑलरेडी इन put it as sell but leave it as of now for you all. इसका रिजल्ट है क्या बजाज इसका? हो चुका है। Good reversal, 1 2 3 reversal. Let me keep it in watch list. Avistar. ऐसे मूवी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्साइड तो सेल है, एक्साइड इज अ सेल। कहाँ सेल करेंगे? Excite look to guys sell on this trend line. Whenever you see it on this trend line, that's where you look to sell. Okay, it is also a sell. Yeah. Bosch. Ashok already done. Okay. So I'm leaving this one because I've also exited. Tata Motors is also a sell, but Tata Motors may abhi we can expect a small up move before it falls. Okay. So Tata Motors, may you make this trend line? This should be the trend line. ये आपका हो गया लो वन, ये हाई वन, अब ये लो टू, तो एक हाई टू आना चाहिए, and that's where you will look to sell. Okay, so on this trend line we'll look to sell, not right away. Maruti, leave it. हीरो का रिजल्ट कब आने वाला है ना?
हीरो ऑल्सो विल गाइस कीप इन वॉच लिस्ट, ओके, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है। कीप इट इन वॉच लिस्ट। अभी तो ये बुलिश लग रहा है, जैसे ये ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन, देन वी लुक एट सेलिंग इट। एज ऑफ नाउ just ignore it. Clear? Any question guys on autos? मारुति सर कोई व्यू नहीं छोड़ दो, इसके बारे में? मारुति अच्छा पैटर्न नहीं है। देखो सारे चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आते, जो नहीं समझ में आया छोड़ देना चाहिए, और जो क्लियर हो वो ले लेने चाहिए। इनफैक्ट लेट मी गाइस टेल यू वन थिंग, जब मैं ट्रेडिंग नया नया स्टार्ट किया था, सीख रहा था, तो मुझे फ्लैग एंड पोल समझ में आ गए बहुत अच्छे से, हायर टॉप हायर लो इजी सिंपल। तो मैं कुछ और करता ही नहीं था, मैं सिर्फ फ्लैग एंड पोल देखता था। मुझे जिसमें फ्लैग एंड पोल दिखता था मैं उसमें ट्रेड लेता था, जिसमें नहीं दिखता था लेता ही नहीं था, सिंपल था। जो समझ में आ तो सेम चीज, you can make money even if you understand one particular pattern properly, but then you should ignore everything else. Once you see your pattern and you are sure about it, you trade on it, else you don't trade. You can even make money by that, but then you should have the patience, okay, to see that pattern and trade only then. Okay, anyway banking पे आते हैं। फ्लैग एंड पोल में जब एंट्री लेते थे, क्योंकि दैट्स अ पैटर्न यू नाउ लुक एट, तो आप यू यूज्ड टू लुक, अगर लॉन्ग हो तो यू यूज्ड टू लुक टू बाय ऑन द लो ऑफ द फ्लैग, राइट? एंड शॉर्ट हो तो यू लुक टू सेल फ्लैग के हाई पे। हाँ नहीं यार, मैं हमेशा ट्रेंड लाइन पे लेता था, ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करता था, ट्रेंड लाइन बनाता था। फ्लैग एंड पोल जब भी बनता है हमेशा एक ट्रेंड लाइन भी रहती है, फ्लैग एंड पोल से समझ में आ जाता तो मुझे एंट्री लेना है, ठीक है। अब मैं उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में उसमें ट्रेंड लाइन देखता था और उस पर एंट्री लेता था। ठीक है, ओके। HDFC बैंक देखो guys, right now not a very clear cut signal, okay, neither on weekly, on daily, looks like 1 2 3 leg of correction is over, might see a little bit of a move, so sideways leave it. Axis clear cut sell, एक्सिस में आपका क्लियर कट सेल है, कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न है, क्लियर कट सेल है, इतनी सारी लाइनें हैं, बताओ इसको, ठीक है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखो, थोड़ा बढ़िया आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, ठीक है। अब नाउ एक्सिस यू कैन इवन सेल इफ इट गोज बिलो लास्ट वीक लो, ठीक है, और इफ इट कम्स नियर द ट्रेंड लाइन दैट्स वेयर यू सेल इट, ओके। और एक और चीज, जब भी ट्रेंड लाइन के पास, अगर ट्रेंड लाइन के पास आके मान लो कुछ ऐसी कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, यू डोंट सेल इट देन, सेल ओनली ऑन द वीकनेस, ओके, नॉट ऑन स्ट्रेंथ। So look at axis also, if it goes below last week low it is sell, if it comes near the trend line that's again then a sell, okay, but if it goes above the trend line exit it. Kotak also 1 2 3 done, can show a little bit of upside before falling, so sideways. अब देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स भी साइडवेज है और आपके बड़े दो बैंक भी साइडवेज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस एक्सिस अगर सेल भी दिखा रहा है, बी कॉशियस व्हाइल सेलिंग इट, बिकॉज ऑफ द होल इंडेक्स दिस माइट अगेन एंड अप मूविंग अप, ओके। सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। अब जैसे आईटी था, फुल इंडेक्स इज आल्सो सेल, स्टॉक्स आर आल्सो सेल, सो दैट्स अ वेरी सिंपलर सेटअप फॉर यू एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। दिस इज ऑल्सो अ सेल, IDFC लास्ट वीक के हाई को स्टॉक मान के सेल कर सकते हो। इन द सेंड में ऑलरेडी मेरा शॉर्ट है, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड माय शॉर्ट।
No new entry on IndusInd. I'm already short in it. Let RBL close above this. Let it fill this gap and then we'll look to short RBL also. As of now, it's in the short side, but the leg complete ho chuka should actually go up. Okay, so leave it. Let's leave this for sideways as of now. बंधन छोड़ दो ऑलरेडी इसमें मेरा शॉर्ट है बट लीव इट इट्स अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स चार्ट राइट नाउ लीव दैट पीएनबी छोड़ दो फेड बैंक छोड़ दो इसमें भी शॉर्ट ही था मेरा आईसीआईसीआई अगेन साइडवेज ओके दिस इज अ ट्रेडिंग रेंज अब ये देखो ये फ्लैग है पोल है ये आपका पोल है उसका ये फ्लैग बन रहा है अभी ठीक है सो लेट इट कंटिन्यू अभी साइडवेज है ये clear cut sell. This is a very good sell. Bank of Baroda. So Bank of Baroda is a very good sell, but sell only below 91. Below 91, you can look to sell Bank of Baroda. EU Bank. छोड़ दो. SBI looks like the thing. Yeah, ये भी सैली है सर बॉब का एसएल किसका बॉब का शुड बी लास्ट वीक आया और उसके पहले जो डोजी बना उसका इस कैंडल के नीचे आए तो आपको शॉर्ट करना है ये कैंडल का हाई 93 आप स्टॉप लॉस दोगे फिर ठीक है ओके तो ये हो गए आपके बैंक्स अब आप फार्मा में एक्चुअली इस वीक ज़्यादा कुछ करोगे नहीं क्योंकि इसमें एक थोड़ा रिवर्सल छोटा आ सकता है उसके बाद सेलिंग आएगी तो फार्मा में रेड्डी में देखो डिमांड जोन पे है लुपिन अगेन सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का बट देखो लुपिन इज अ वेरी गुड सेल अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये देखो यहाँ पे trapped longs are here very strong in fact we also went long lupin if you remember lupin or at least I was long ठीक है मेरा long था मेरा exit हुआ and I am already short on it so lupin people if they want they can take a shot in lupin it's a very good shot okay just that you if you are a safe trader you should avoid it okay or trade only if it goes below this line but it's a very good shot. I am already short on it. Cipla in demand zone, 3 leg completed, might see an up move before it actually falls. So leave it sideways. Hai. Oro already given up sell. Very clear cut sell in Oro Pharma. Okay, again, this is a sell with a stop above last day, Friday का high. Friday का high लेके इसको sell कर सकते हो. Sun Pharma भी sell है, सब sell है. कितना ट्रेड करोगे? Sun Pharma से अच्छा औरो है. Sun Pharma छोड़ दो अभी. Cadila. Torrent is a good sell with last week's last day high as your stop loss. अपोलो भी सेल है लेकिन अपोलो में ये कंप्लीट हो जाने तो ये करेक्शन हो रहा है करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन वी लुक टू गो शॉर्ट अगेन अपोलो में इसको डालते हैं वॉच लिस्ट में बायोकॉन छोड़ दो दिस लैब See, this is what I'm expecting. इसमें क्या नाम है सिप्ला में लुपिन में होने लुपिन में आपको समथिंग लाइक दिविज दिखेगा ऐसा लुपिन दिविज तो अभी छोड़ दो अभी लेने लायक नहीं है ऑलरेडी गिर चुका है एल्केम को
वॉच लिस्ट में डालेंगे, अप मूव हो रहा है, जैसे ही डाउन मूव आएगा विल लुक टू सेल एल्केम। ठीक है, क्लियर गाइस? फार्मा में एनी क्वेश्चंस? चलो अब एफएमसीजी देखते हैं। ACC is also a cell, अब इसमें एंट्री कहाँ लेंगे? ACC तो सेल कर दो यार, 2284 जो ये इसका हाई है, थर्सडे का हाई जो है इसका स्टॉप डाल के ACC इज अ सेल, ट्राई टू सेल ACC। और देखो जिसमें आपको स्टॉप लॉस ज्यादा लगे उसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज बना लो ऑप्शंस की, यूज दैट टू सेल। रेशियो स्प्रेड्स जो होते हैं यू कैन क्रिएट दोज। सर एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे प्लीज? जैसे TCS में हमने लिया, लॉन्ग में स्प्रेड लिया, जैसे सीसी में एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कैसे स्प्रेड बन सकता है? हाँ, ACC में क्या करो, एक लॉट तुम पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करो, 2 लॉट आउट ऑफ मनी बाई कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, सेफ खेलना है तो एक लॉट कॉल ऑप्शन तुम अपना बाई करो और 2 लॉट सेल करो आउट ऑफ मनी, सॉरी उल्टा। या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। ठीक है, अल्ट्राटेक इज आल्सो सब सेल है यार, क्या ही है उसमें, रैम को छोड़ दो, जरा बस देखना ये है कि अच्छे ट्रेड उठाने हैं, सेल तो सारे ही रहेंगे। इसमें ऑलरेडी मैं शॉर्ट हूँ। ब्रिटानिया 1 2 3 4, ओके, ब्रिटानिया में आपका, ब्रिटानिया ऑल्सो विल कीप इन वॉच लिस्ट, विल लुक फॉर अ, ये आपका हाई 1 है, हाई 2 पे विल लुक फॉर एन एंट्री अगेन। ओके, Godrej CP already a sell, continue that। ठीक है, जुबिलेंट छोड़ दो अभी, VBL जुबिलेंट वॉच लिस्ट में डालो, VBL में फिलहाल नहीं, मैरिको, UPL ऑलरेडी शॉर्ट होना है, रॉबर्ट, सर इंडेक्स के हिसाब से तो वी वर लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक इन एफएमसीजी। हाँ बट नॉट लुकिंग, मतलब पुल बैक आ सकता है। अब जैसे देखो बड़ा कौन सा है, ब्रिटानिया देखो, इसमें वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ मूव बिफोर इट गोस डाउन। ACC में देखो हम शॉर्ट हैं, ओके, बट वेरी मच पॉसिबल कि ये रिमेन साइडवेज बिफोर गोइंग डाउन, दैट्स व्हाई आई सेड कि यहाँ की जितना क्लोज सेल कर सको इट्स बेटर। ओके, अल्ट्राटेक में इसीलिए कॉल नहीं दिया, but that might also show a little bit of pullback. This is also a big stock. So index के लिए तो बड़े stocks देखो, बड़े stocks are like they might show a little bit of pullback. ओके, Gradual में भी आ सकता है pullback। इसमें उधर लगाते हैं, Havells में ऑलरेडी शॉर्ट है, कंटिन्यू रहेगा। अब देखो Havells में 1240 तक ये पहुंच गया ना, 1240 थोड़ा आपका डिमांड जोन है, so either you should book half, and if you are a one lot person, book full, okay, because from here it might show a bit of a move before it actually falls, if it has to fall at all, okay। So Havells also यहाँ से sideways candle is very bearish candle, looks like it will mostly fall, but on the safe side because that is the demand zone, a person who is just trading in one lot should look to book because they are already in good profit। Okay, we sold it here, remember, यहाँ पे जब वो ब्रेक किया तो तब we sold it, big money we have made here in the uni।
And Unilever can also be sideways to up. ITC is looking good to sell here. डिमांड जोन में तो है ये, बट क्लियर कट सेल है, इसमें एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा. And the inside candle will not sell. ITC also might go up actually. Voltas. Voltas का flag and pole बन रहा है. This is again something which you look to sell. इसको भी watch list में डालता हूँ मैं. I'll update you guys. It like nothing. Colgate nothing. McDowell nothing. McDowell is at its support. Okay, this is the trend line which is giving it support. Once this goes, you'll sell it. Okay, and this you keep it in your watch list, guys. Once this goes, sell it. Okay, this will give you moves like Godrej CP, Godrej Properties. UBL में ऑलरेडी शॉर्ट है, लास्ट वीक से ही चल रहा है. विल कंटिन्यू विद द शॉर्ट. इमामी में भी लास्ट वीक से ही शॉर्ट चल रहा है. कंटिन्यू द शॉर्ट. नेस्ले माइट शो अ लिटिल बिट ऑफ मूव. डिमांड जोन से इसने पुल बैक दिया है, वेरी स्ट्रांग पुल बैक. So United Spirits में when we short after the trend line breaks, यस, McDowell's में, हाँ ऑब्वियसली. तो उसमें SL will be just above the trend line या depending upon the candle कैसे form? कैंडल देख लो ना जिस पे इसने ब्रेक दिया होगा. अब देखो इस कैंडल पे ऑब्वियसली यू विल नॉट शॉर्ट बिकॉज इट्स बुलिश कैंडल. Right. This is where you will short. 1591. You keep this SL as 1606. Right? ठीक है. हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, स्टॉप लॉस अच्छा मिलेगा. एंड फिर एंड ऑफ द डे पे क्या करो, यहाँ पे जैसे अब दिन खत्म होने वाला है एट दैट टाइम, अब ये डेली चार्ट है, अब आपका दिन खत्म हुआ यहाँ पे 1564, आपने 1590 पे शॉर्ट किया था. अब 1564 पे इधर यू बुक. ओके, और लाइक आई सेड इफ यू आर कैरिंग देन यू हेज नाउ. अब यहाँ पे यू हेज इट. तो इससे क्या होगा, आपका ये जो प्रॉफिट है लॉक हो गया. ठीक है, इतना तो आप बना ही रहे हो. नीचे गया तो आपने क्योंकि शॉर्ट किया फ्यूचर में, हेज किया ऑप्शन से, स्टिल यू विल मेक मनी. बट ऊपर गया तो यू विल नॉट लूज दिस एंटायर मनी. Right. सर आप कितना OTM पुट शॉर्ट करोगे इस केस में, लाइक मतलब अगर आपको पुट यार जैसे देखो 1566 तक आया, डे क्लोज होने वाला है, यहाँ पे चल रहा है 60 1560. अब आपको दिख रहा है कि दिस इज वन डिमांड एरिया, राइट? देखो दिस इज द डिमांड एरिया, यू कैन सी. आप यहाँ पे हो, दिस इज द डिमांड एरिया. सो व्हाट विल बी द आउट ऑफ मनी पुट यू लुक टू शॉर्ट समवेयर लाइक दिस 1540, 1530, 1540. हाँ दैट यू शॉर्ट. ठीक है. ऊपर से एक और चीज दिमाग में रखने वाली है ना कि ये लास्ट वीक है एक्सपायरी का, राइट? सो इवन द थीटा डिके विल बी मोर फास्टर, राइट? इन दैट केस क्योंकि सिर्फ एक ही वीक बचा है, यू कैन आल्सो लुक टू शॉर्ट अ लिटिल बिट. यही 1560 का ही शॉर्ट कर दो क्योंकि उसमें भी तो कुछ प्रीमियम है. हाँ राइट सर, वो तो प्रीमियम पे डिपेंड करेगा. एग्जैक्टली. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव. अब मान लो पूरा महीना बचा होता, देन आई वुड हैव लुक टू शॉर्ट दिस 1500 का. बट अगर मैं अभी 1500 का पुट शॉर्ट करने जाऊं तो 50 पैसे 1 रुपए का होगा, तो मेरे को हेजिंग क्या मिला? कुछ नहीं. ठीक है. Right, so according to the premium you decide what you have to do. And in that case also, since क्योंकि last week चल रहा है, premium low है, in that case you can also look to hedge by buying call option. क्योंकि अब अगर आपको पता है कि हाँ आपने 1590 पे आपने शॉर्ट किया है, अब से 1580 का आपका जो कॉल ऑप्शन है 1 रुपए 2 रुपए चल रहा है. सर वो प्रीमियम ट्रेड ऑफ जो बेस्ट है वो करना चाहिए ना. Exactly, based on premium you have to decide because exactly hedge should also work.
अबाउट ऑफ पुट मनी पुट ऑप्शन शॉर्ट किया जो बेंचो 2 रुपए का है, तुम्हारा यहाँ पे 1570 से 1590 में 20 पॉइंट का है, तुम्हें 20 पॉइंट हेज करने के लिए 2 रुपए का अगर कुछ शॉर्ट करोगे तो कहाँ तुम्हारा 20 पॉइंट हेज होगा, मैक्स वो 2 रुपए देगा, तो इट्स यूजलेस। सर अब समझ आ गया, मतलब डे एंड पे 230 to 330 हमें सिर्फ अपनी पोजीशंस को देखना है, या तो बुक करना है या तो हेज करना है, उस पे तुम स्ट्राइक पकड़ो जहाँ पे अच्छा प्रीमियम और अकॉर्डिंगली करो, यस है ना? यस यस, ठीक है, क्लियर। पेज सर ये मैकडॉवेल का जो आपने चार्ट दिखाया था, कैन यू गो बैक अगेन सर? सॉरी, मैकडॉवेल जो इसमें नो सॉरी यूनाइटेड वाला सर, सॉरी यूबीएल का। इसमें सर अब ट्रेंड लाइन जो है राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो ऑब्वियसली एसएल बहुत बड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए फिर हाँ, अगर तो ये वो नहीं रखोगे ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, कहाँ रखा हो, वो तो मैंने बोला ना कि जिस कैंडल में आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, दिस वाज द कैंडल राइट, वेयर इट ब्रोक, just sell here, you keep this as the stop loss. ओके। Yeah, you don't have to keep this trend line as the stop loss. So even if we look to enter now, so what would be the stop loss? The previous Right now you bearish should not candle? enter because you see there is a green candle here. So this might be again a flag which is forming. So this can go up a bit also. Okay. Okay. So on flag and pole you enter only on the trend line or below this. Either below this or near this pole के top पे। अगर हम इसमें सर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी तो बहुत कम है, तो ये एक तरीके की बायस ट्रैप वाली कैंडल नहीं समझ सकते हैं इसको? Whole market is down. Anyway, page will also go down, but let's leave it because risk reward is not good. Trend line pass में ही है। Procter and Gamble looks a very good sell on the weekly. अब इसमें एंट्री देखते हैं। अब ये देखो, ये पोल है जिसका ये फ्लैग था जो कि फेलियर हुआ है। सो दिस इज वेयर यू सेल एंड यू कीप अ स्टॉप समवेयर अराउंड 16,200 के आसपास, ठीक है ना। दिस इज अ बिग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, सो 200-300 रुपए इधर उधर हो सकते हैं, बट दिस इज अ सेल विथ 16,200 के आसपास का स्टॉक। छोड़ दे, बहुत गंदा चार्ट है। Bata will make this trend line and we'll wait for this trend line to break. Only if this trend line breaks, we'll look to short. Okay, so right now watch list. Zeal already clear है, ठीक है। This will fill this gap mostly. लाइव में भी समझा रहा था मैं, 270 तक जाएगा ये, ठीक है, 270 तक जा सकता है। बस in the meanwhile just notice one thing कि this region is a demand zone, so might see a little bit of reversal, so accordingly you book your profits. but अगर इसके नीचे ही स्टार्ट होता है गैप डाउन के साथ तो सीधे 270 जा रहा है, ठीक है। तो continue to be short on this. PVR also just wait for this trend line to go, we'll short it. Okay, अभी थोड़ा है यहाँ पे, इसको जाने दो। वैसे तो ये सेल है, मैं आई एम ऑलरेडी शॉर्ट ऑन PVR. To you guys, I'll give you trade very soon. Okay. Just cause of this double bottom, I'm not given this zone. That is the reason I'm not giving you guys trade. So we clear होने दो, I'll give you guys trade after that. बाकी छोड़ दो, इस तरह कुछ है नहीं देखने लायक। Oberoi is a sell. Last day का हाई जो था उसका स्टॉप डाल के, IB was already a sell, already given also last week के वेबिनार में, continue with that. यहाँ पे ही सेल किया था हमने। Godrej already sell, continue that.
डीएलएफ में वेट करते हैं ट्रेंड लाइन के जाने का, विल देन टेक और कॉल व्हाट टू डू। तो ये वेट एंड वॉच में है। ब्रिगेड छोड़ दो, ब्रिगेड वैसे सेल है बट छोड़ दो, ये एफएनओ में नहीं है, छोड़ दो इसको। इसलिए सनटेक छोड़ दो। एलएनटी में ऑलरेडी सेल था लास्ट वीक से, विल कंटिन्यू दैट। अब LNT में भी you can see a little bit of pullback before it actually goes further down, but LNT is now on its way actually to 1700 levels. Okay, जाएगा ये 1700 पे जरूर। अब LNT में फिलहाल तुरंत एंट्री नहीं है, सो अगर कोई पुल बैक आएगा विल एंटर देन। शोभा नथिंग छोड़ो, ठीक है। सो दिस इज इट। फाइनेंशियल्स clear cut short 1 2 3 हो गया, might see a little bit of pullback, should be a short. Okay, you will take a trade closer to this, so फिर से एक flag बनने दो and that's where you look to short PFC. SBI Life already 1 minute trading range, हार्ली में देखे जरा इसमें। इसका तो हो गया, इसको रखते हैं वॉच लिस्ट में। HDFC was a sell last week से, will continue। जैसे ही ये इसके नीचे आया वैसे ही ये सेल हो गया। Again इसमें 1 2 3, now you see a little bit of pullback can come, keep in sideways, but idea is to sell it again whenever you get chance। HDFC AMC was also a sell, like sell है। HDFC Life में you can see a little bit of pullback again, so Muthoot डिमांड जोन छोड़ दो, ये तो इसमें स्टार्ट है ऑलरेडी, छोड़ दो। REC is also a sell guys, but वही है, अभी इसको फिर थोड़ा बाउंस बैक करने दो before you actually sell it, okay, because this candle is big and इसका lot size थोड़ा बड़ा है, and this is also a sell। I have not sold it by the way, REC, just to be clear, and it is also looking very negative। ये इसका डिमांड जोन है, डेली चार्ट क्या बोल रही है भाई, वेट करो इसको, इसके नीचे जाने दो, then only you look for selling it। Okay, right now I'll keep it in watch list। श्रीराम सेल है ऑलरेडी इसका, अब इसका वो भी बन गया आपका, क्या बोलते हैं, हाई वन बन चुका है, now it should continue on its downward journey। Okay, so continue on this, those who have already booked profit, not an issue। सर कल रिजल्ट है इसका श्रीराम का 24th, कल रिजल्ट है, आने दो भाई, रिजल्ट क्या ही कर सकते हैं। श्रीराम re-entry possible, sir? Yes, actually you can। Okay, but just see this trend line is not broken on the upside। Okay, just because tomorrow is result, so wait for that। Mostly it should not be, and the moment it starts going below 1190, you should sell।
ये मैंने फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं किया, मतलब ऑप्शन ले लिया 1100 की, 3 रुपए में मिल हाँ रहा वो था, रखे रहो लेके रख लिया। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इन दोनों में भी सेल है, लेकिन इन दोनों में सेल काफी पहले दे दिया था मैंने, आई गेस लास्ट वीक से भी पहले दिया था। I don't know how many of you have kept it. मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है, बट ठीक है, नई एंट्री नहीं है, मैंने में भी नहीं है। ICICI प्रू लाइफ, इसमें मिल सकता है एंट्री, है ना? Look for this line to get broken. If it gets broken, if this line gets broken, that's where you short it. Okay. That's good on finance. बाकी अब देख लेते हैं बच्चे कुछ। इधर कुछ नहीं है, इसमें ऑलरेडी शॉर्ट है, कंटिन्यू विद दैट शॉर्ट। टारगेट अभी हमारा 2700 रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी इसमें शॉर्ट है, कंटिन्यू विद दैट। ना और आगे में क्या चल रहा है इसमें, कोई बात नहीं। इंडिगो में ऑलरेडी सॉरी अंबुजा में ऑलरेडी स्टॉक, अच्छा ये भी शॉर्ट आप लोग का निकल गया था ना, शॉर्ट है ऑलरेडी जी। I'm already short the guys. Continue with that. Toy industry also looks like minimum आपका somewhere around 2160 2200 तक ये जाना चाहिए। पेट्रोनेट nothing। हाँ पेट्रोनेट में भी एक ध्यान दो कि it's already at its demand zone. Natural gas is weak, so if you see this line getting broken 212 का, in that case you can look to go short on Petronet. Okay, keep stop loss as जो भी breakout candle हो उसका top। इतना शॉर्ट लिया है भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा है। Guys, almost everything is short. Okay, I'm just looking at where can we find the best trades. Invent Concor is a polar short, but what I'm looking at now is the best trade that you can get. The minimum stop. So power grid is a sell 216 के स्टॉप के साथ small sell।
आरती में ऑलरेडी शॉर्ट है, आप लोग निकल चुके हो। आरती में सर उस दिन तो एग्जिट कर लिया था, कैन वी री एंटर? उसमें शॉर्ट ही है, लेकिन नॉट सेइंग कि go ahead and take short now, but I'm keeping it also because I'm already short, so also for me no new entries in Aarti as of now. Siemens, IOC, ये भी शॉर्ट है, अब इसमें शॉर्ट लेंगे कहाँ? So guys, if you see a dip from this trend line, it's already there. You sell IOC also. Bail. Can Bank be short, guys? I think I should now stop it. Guys, almost everything is short. Okay, so there's no point discussing each one. PPCL is short. Slovene is short. Airtel is short. एयरटेल इंट्राडे में भी सर उस दिन किया था फ्राइडे। हाँ, लेकिन आप लोग का निकलवा दिया था ना यार। राइट, तो री एंट्री हो सकती है बिकॉज वापस पुल बैक आया था। Yes, we stored this one. This is a green candle. बताता हूँ मैं, ये मेरे वॉच लिस्ट में है ऑलरेडी। क्या नहीं यार, मैंने रीसेट किया ना। Done guys, done for the day. Lot of short positions. Take the trades which are within your risk appetite. Okay, just be a bit smart. Always see the index, how index is moving, what is the index movement, and accordingly take trades. Your trades will be better if you take these small things into account. The movement of the index, movement of the sector, and all those things that will increase your probability of success. Yeah. चलो खत्म करते हैं। एंड कोई भी ट्रेड एंटर करो ना, जो वेबिनार में हुआ है डिस्कशन, ठीक है, एंड दैट ट्रेड, एनी ऑफ दोस ट्रेड इफ यू आर लुकिंग टू एंटर, एंड इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट रिगार्डिंग एसएल और एंट्री, मैसेज मी, ठीक है। आई एम एनीवे फुल डे ऑनलाइन ऑन दिस टेलीग्राम। जो मैंने ट्रेड दिया वो तो क्लियर है, जो इंट्राडे में मैंने दिया इस लेवल पे करो है ना। जो वेबिनार में डिस्कस हुआ है, अगर इफ यू हैव एनी डाउट व्हाइल एंट्री करने से पहले पूछ लो एक बार, ठीक है। क्लियर गाइस? राइट, चलो गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर रिमेनिंग वीक, एंड Ronak, Dheeraj, thanks guys for maintaining that sheet. Please do it for this week also. Yeah, and देखते हैं इस वीकेंड में फिर से we'll discuss and see how much improvement is there in people, how are they trading and all those things. ठीक है, चलो take care guys, bye bye. Bye sir. Bye. Bye, sir. Bye.